So here is today's second session. Our purpose training है. So you know I tell you that. So this all the workshops have been designed by India Welds with a purpose कि welding को easy बनाना है. Welding tough नहीं है. Stainless steel आप तभी यूज अच्छे से कर पाएंगे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पे जब आपको बेसिक्स ऑफ पता रहेगा. स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग टफ नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों ने स्टेनलेस स्टील को समझा नहीं कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट इज दैट स्टेनलेस स्टील, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील हम लोगों को वेल्डिंग में दिक्कत आती है. वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हम लोग उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, हम सबको पता है. तो दैट इज व्हाई वी गॉट एन एक्सपर्ट जो बहुत सारी चीजों को सजेशन देंगे जो हम लोगों को हमेशा लगता है कि दिस इज वेयर स्टेनलेस स्टील फेल्स. इट इज इजी टू ब्लेम कि स्टेनलेस स्टील का प्रॉब्लम है, नहीं, नॉट ऑलवेज. बिकॉज हम लोग काफी बार गलत ग्रेड उठा देते हैं, गलत सेंसिटिवनेस उठा देते हैं, उसकी केमिस्ट्री नहीं समझ पाते. कैसे आपको लगेगा कि हम लोग हाउ टू वी सिलेक्ट दैट सेंसिटिविटी. हमारे पास मशीन बहुत अच्छा है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू इट. That could be said, still there are problems. So that is why we are getting one expert after another, 3 days, wherein he is one expert who has had a long experience, on-field experience है, academic experience है. पढ़ाते हैं बच्चों को तो आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे. तो ये जितना जो मैंने कल भी बोला था, आज से भी बोला, ट्रेनर को हमेशा डिफिकल्टी होनी चाहिए कन्विंस करने में, इसलिए डिफिकल्टी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज वो तभी होगा जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा. सो आई एम पासिंग ऑन द माइक टू डॉक्टर नानावती, who is welding metallurgist, is an IWT and he is an expert. अब आप देखिए इनको, आपका जो भी काफी बार होता है, मेरे पास बाहर बहुत सारी क्वेरीज आ रही है. Everything boils down to welding metallurgy only. Ultimately हमें वेल्ड पूल पे क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा, तो हमें स्टेनलेस स्टील पता चल जाएगा, तो हमें वेल्डिंग समझ में आ जाएगा. वही वेट है. मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन योर ओन वर्कशॉप. आपके वर्कशॉप पे आप सेम प्रोसेस पे नहीं, जस्ट दैट किस तरीके से उसको अप्रोच करिए उसके. सो नाउ आई एम पासिंग द वेट टू यू, and as usual I am re-announcing it for those who are joining now. There will be an attendance sheet which will be passed. You have to sign it for the certificate. Secondly, there's a feedback form which is going to be given. Please fill up that feedback form. Third, there is an association of welding, skilling and training professionals. इसमें सिर्फ GSSE के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट्री अभी ओपन कर रखना है. ये एसोसिएशन वेल्डिंग को आगे कैसे लेके जाए, वेल्डिंग को एक एस्पिरेशनल कैसे बनाए. एक वेल्डर हमेशा कहता है मैं वेल्डर हूँ, जैसे कुछ हुआ है ही नहीं उसके जिंदगी में, तो वो वेल्डर बन गई. उस चीज को उससे बाहर निकालेंगे ना तभी. द मोमेंट यू गेट कनेक्टेड विद योर जॉब, यू स्टार्ट टेकिंग प्राइड, एंड दैट इज वेयर दिस एसोसिएशन इज गोइंग टू वर्क. ये कोई IWT एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए नहीं बना है. ये एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग कम्युनिटी को आगे लाने के लिए बना है. तो this is like the membership to this association is complimentary for GSSE during this GSSE days. So I'll pass on that form also for you. आप लोग अगर interested है, you can fill up this. So now will you please start the session? That goes good. Thank you, Siddhartha ma'am, for your motivational word, and for my hand introduction. Okay, so I think. I wanted to be having a good interaction because I don't want even I speak from one side, other people only listen. I think अब हमारा healthy interaction रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा. ठीक है. So English Hindi will be convenient. Hindi also, right? So because the point is we should get understood, right? Okay. तो जैसा मैडम ने मेरा introduction दिया है, so I'm connected with welding community. The way I'm associated with Indian Institute of Welding, International Institute of Welding. I did my IWT. I did my research in
welding of stainless steel, defects stainless steel. And now it is by genuine request. I'm representing my institute government Metallurgy college where I'm teaching metallurgy subjects and welding. And I'm also a blog writer. So weldingcollege.co.in. So at the end, I'll be also sharing many case studies I get from industries, welding industries, when I get through troubleshooting of welding. Okay. तो मुझे अच्छा लगे कि आप लोग एक इंटरेस्ट में इतने लोग आए हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट कर देता हूँ ठीक है तो आई यू ऑल बस भाई we begin with okay some questions maybe related to you right कुछ questions है आपके रिलेटेड जैसे हो गया कि पहले तो हमको स्टेनलेस स्टील अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि आप लोग क्या है you are in the fabrication of stainless steel, right? आप लोग experience welding engineering में हो, आप लोग ये fabrication की business में हो, तो पहले तो stainless steel को अच्छी तरह से समझ लेने के लिए there are some questions. Like first is what makes stainless steel stainless even after welding? तो भी जरूरी है कि stainless जो हमारा नीचे कम वॉल्यूमेट्रिक आयन का जो alloy है, जिसका पर्पस है corrosion resistant, वो भी after welding रहना चाहिए. क्योंकि कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जो आपका फैब्रिकेशन जिसमें कुछ फिटिंग हो गया कुछ में कोरोजन मतलब ग्रेन माउंटेड पे कोरोजन हो गया ऐसा में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको भी सही तरीके से कैसे वेल्ड करना चाहिए और क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए वो सारा चीज इसमें क्योंकि जो हमारा स्टेनलेस स्टील है ठीक है ना उसका फैब्रिक बहुत बड़ा है छोटा है पर इसमें अलॉयज बहुत सारे ज्यादा है जैसे कि हमारा ऑप्शन स्टेनलेस स्टील है तो अपना 304 304L 316 316L 321 347 फिर हमारा है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है हमारा 409 फिर हमारा 400 स्टेनलेस फिर हमारा मार्टेन स्टेनलेस स्टील है ठीक है 410 है फिर हमारा डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है 20 कॉनियम 5 निकल 25 यूरोनियम 7 निकल फिर हमारा एसिड हाइड्रोजन नेट स्टेनलेस स्टील राइट 77 74 तो रिलेटिव है बहुत डाइवर्स है स्टेनलेस स्टील का जो फैमिलियर इतना डाइवर्स है तो इसमें हर एक चीज का बिहेवियर अलग अलग होता है क्योंकि आपका स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है कि आपका उसके भी यूसेज बहुत ज्यादा है फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्रीज अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम गुजरात तो गुजरात से अहमदाबाद यू नो कि वहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा क्लस्टर है फिर डेयरी इंडस्ट्रीज हमारे IDFC डेयरी मशीनरी जो है वो डेयरी इक्विपमेंट्स बनाती है फिर क्रायोजेनिक इंडस्ट्रीज if you are part of Andox India Limited they are the manufacturers of cryogenic vessels right तो हम लोग क्रायोजेनिक में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के डिफेंस के और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जैसे फैब्रिकेशंस में फिर हमारा जो स्टील है वो जनरली ऑफशोर एप्लीकेशंस भी है इसमें हमारा शुगर इंडस्ट्रीज है फिर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है फिर रिफाइनरीज है जो GSSE है GNFC है राइट सो जब सब जगह पे मैं जब क्लास लेके जाता हूँ हर जगह पे एवरीवेयर दे डिस्कस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कोई बोलता है कि स्टेनलेस में ग्रेन माउंटेड पे ऐसे करोजन हुआ है तो बोलता है इसमें डॉक्टर जैसे मतलब पीटी करोजन है तो कुछ आय कंटामिनेशन हो गया है तो एक्चुअली क्या क्या एक चीज ये मटेरियल सेंसिटिव है जस्ट लाइक कार्बन स्टील जो है वो इतना हमारा वेल्डिंग में मतलब प्रिंसिपल नहीं है वैसा कार्बन स्टील को भी टेक केयर करना चाहिए पर जो स्टेनलेस स्टील है वो थोड़ा ज्यादा टेक केयर है लेकिन दूसरा है why do some stainless steel welds crack even if they look perfect from the outside वहां से सब कुछ अच्छा दिखता है अभी क्योंकि ग्रेज जैसे कि नॉर्मल जो कुछ बनते हैं फर्नीचर बनते हैं अब तक से बड़े कुछ वैसा तक ऐसा भी दिखता है कि बाहर से सब ठीक ठाक है पर अंदर से कोरोजन स्टार्ट हो जाता है और अंदर से स्टील धीरे धीरे वीक हो जाता है इट कैन नॉट विथस्टैंड द force and at the result टूट जाता है तो फिर डिस्कस करना है दूसरा है change the corrosion resistance of stainless steel
क्या वेल्डिंग से जिसका कोरोजन रेजिस्टेंस चेंज हो पाएगा? हो सकता है, हो सकता है। वाई और वाई नॉट? If it's white, why not? ठीक है ना? तो क्या ऐसा हम वेल्डिंग में गलती कर देते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग कोरोजन चेंज होता है, ये कौन सा रेजिस्टेंस चेंज होता है? Then why is डेल्टा फेराइट? अब आपने डेल्टा फेराइट का नाम सुना होगा। डेल्टा फेराइट में क्या आपका जो स्टेनलेस फैब्रिकेशन है, इसमें जो लेकिन से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा डेल्टा फेराइट, जो फेराइट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है? वो फेराइट स्पेसिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उनको भी कैसे मेजर करना चाहिए, क्या क्या मेजरिंग टेक्निक्स है, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होता है, वो भी हम आगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर जो है व्हाई डू डिफेक्ट्स स्टेनलेस स्टील नीड केयरफुल कंट्रोल वेल्डिंग? आप में से कौन कौन से लोग डिफेक्ट्स स्टेनलेस स्टील में डिफेक्ट्स स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग की वेल्डिंग में डिफेक्ट्स स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में डिफेक्ट्स स्टेनलेस स्टील, ओके, ठीक है? आप देखो, आप ये सेशन है वो इतना क्यों लेना चाहिए? आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आपके की जो भी है कुछ इनपुट्स है, यू कैन ऑल्सो शेयर योर वैल्यूएबल इनपुट्स, सो दैट विल बी अ गुड नॉलेज शेयरिंग सेशन, राइट? ओके, तो फिर यूरिया प्लांट जो है जो जैसे कि हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी GSSE है, राइट? गुजरात अमृता फर्टिलाइजर भी है, फिर जो यहाँ जहाँ तो यूरिया प्रोडक्ट हो रहा है, फिर कोलकाता में FCPI है, फिर बहुत सारे ऐसे कि यूरिया मैन्युफैक्चरर्स है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर से, गुजरात नर्मदा है, ठीक है? वो सारे यूरिया प्लांट से उसमें फेराइट का क्या रोल रहता है कि अगर आप स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन को यूरिया प्लांट के लिए बना रहे हो तो उनके क्या स्पेसिफिकेशंस रहना चाहिए, पर्टिकुलरली फेराइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Why do we intentionally allow a small amount of ferrite in the austenitic stainless steel beads? At the job, you might be doing this reason behind it, but the reason नहीं जानना बहुत जरूरी है कि जो मेंटेन होना चाहिए okay. Next है in defects stainless steels, what happens if ferrite is too low or too high? बहुत सारे ऐसे fabricators जो defects stainless steel पे डील करते हैं, वो लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो लोग कैसा बताएं? देखो, हम लोग defects stainless steel का फेराइट जो है वो मेजर करें 35 55 विच वेरिगोस्कोप, फिर हमारे जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है 2209 20 क्रॉप टाइम लीकर, वो भी इस फैब्रिकेटर हमको वेल्डिंग मेटल का ऑपरेशन जो है आपको मेजर करके देता है, पर इसमें हमारा मिसमैच आ रहा है। हम लोग जो वेल्डिंग मेटल का फेराइट मेजर यूज कर रहे हैं और जो उनका कंज्यूमेबल का फेराइट यूज कर रहे हैं उसमें बहुत है डिफरेंस आता है, क्योंकि डाइल्यूशन नाम की चीज होती है, तो वो भी है तो कैसे करके उसको डाइल्यूशन कंट्रोल करे, और वो भी है, ठीक है? तो इसके फेराइट स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए? सेकेंडली, can you guess why to pay steel metal are exact to be around 30 to 35 ferrite to welding metal? ना तो questions लिखे फेराइट स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इसमें कितना फेराइट होना चाहिए ताकि आपका डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील प्रोटेक्ट हो। देखो, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील क्या यूज होगा आपका फॉर सर्विस एप्लीकेशंस, इसमें जहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्लोराइड एटमॉस्फेयर है, पर्टिकुलरली आपको स्टेनलेस स्टील को दोनों चीजों से बचाना है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो दोनों से और ये स्टेनलेस स्टील को खत्म हो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है? तो क्लोरीन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर, इसके से आपका स्टेनलेस स्टील का स्ट्रेस कोरोजन हो जाता है। स्ट्रेस तो मतलब में रहता है, ये तो वेल्डिंग करते हैं, सेंडिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, एनी मैकेनिकल एक्शंस। What challenges do you think arise when welding stainless steel over carbon steel? अभी तो कुछ स्टोरिंग भी स्टेनलेस स्टील में चल रही है, पर अभी स्टेनलेस स्टील के साथ कार्बन स्टील जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल SF570 के साथ आपको SS6 कैसे चुनना है, उसके ऊपर उसका ओवरलेइंग करना है, इसके हमारा 2 इंच का बेस मेटल उसके ऊपर SS316 का CRO बना है और कोरोजन रेजिस्टेंस ओवरले करना है, राइट? देन व्हाट वुड बी द स्टोरी? तो वो भी उसमें क्या टेक केयर करना है, फिर इसी तरह भी जॉइंट्स बनाना है, जैसे क्रोम वॉल स्टील है, ऑन वन एंड वी हैव क्रोम वॉल स्टील, अदर एंड वी हैव स्टेनलेस स्टील, तो हाउ टू manage joint, how do you get the proper strength and proper corrosion resistance, right? तो भी एक चीज है।
सो अगर आप कॉस्ट पे रिलेटेड पर बात कर रहे हो, जैसे कि आपने कार्बन स्टील का बेस मेटल है, उसके ऊपर हम 316L का ओवरले काम कर रहे हो, और आपका कार्बन स्टील को आपको पीडब्ल्यूएसटी करना है, ऑक्सीडाइज ट्रीटमेंट करना है, तो व्हाट विल हैपन टू स्टेनलेस स्टील में? तो स्टेनलेस स्टील का क्या होगा? देखिए उससे प्रेशर खाना का नहीं so it is a problem, and when you say foreign finding this temperature, stainless steel overlay steel वो dangerous zone है, हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? So there are many questions, you know, there are some difficult questions, but I am sure many questions may become your side. आप लोगों को भी बहुत स्टेनलेस स्टील में एक्सपीरियंस हो, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज को हैंडल किया है, you might be knowing all those things, but yeah, you know, हाइड्रोलिक इश्यू का बहुत क्या रहता है, जैसे कि वेरी इसमें आपको इसमें कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लाइकवाइज हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की भी एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। Then we just reach out to such stainless steel people, we educate them, we just let them know the facts, कुछ facts के साथ बात किया जाए तो लोगों को भी कुछ benefit हो. There is our responsibility. Okay, so in this questions, and I hope these questions might be applicable to you, right? Okay, तो हम लोग अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें ना, ठीक है, तो अभी हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो स्टेनलेस स्टील है हमारा, तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हमारा ये लेसर नहीं होगा, क्योंकि लेसर है यहाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा शाइनी है। ओके, ठीक है, मैं स्टेज पे आके आपका एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में वो जटिल हिस्सा है, आयरन, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, अलॉय, राइट? सो we have here chromium, we have here nickel. So सब जो बोल है, सब वो जो कैन है वो निकल और क्रोमियम के बीच में है। निकल परसेंटेज, क्रोमियम परसेंटेज, वो स्टेनलेस स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 80% जैसा आपका ये क्रोमियम रहा और 8% जैसा आपका निकल रहा, एक में फैमिली ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील स्टार्ट्स, तो आपका ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस राइट मींस जब आपका कुछ 20 में पास क्रोमियम रहेगा और विच 5-7% आपका निकल रहेगा, योर लिक्विड स्टेनलेस स्टील फैमिली स्टार्ट्स। Likewise, if you have a more chromium and surround with 45% of say this particular nickel, and you have then you have artisanal stainless steel. So likewise, जो stainless steel का जो alloy design है, वो alloy design होता है निकल और पेनियम। Everywhere आप देखो निकल और क्रोमियम भी कंटेंट जो है वो ही माइक्रोस्ट्रक्चर जब ये है डिसाइड करता है। लेकिन अभी डायरेक्ट वो स्टेनलेस स्टील का फैब्रिक डिस्कस करें, राइट? तो फैमिली में ऐसा है कि ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील डायरेक्ट उसका जो बेसिक है वो 304 है, फिर उसका जो ठीक है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज ग्रेड होता है। हम उसकी भी बात करेंगे, उसमें भी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली पैकिंग। देन वी हैव 316, 317, 904। 904 किसी ने भी सुना होगा। 904 इज अवर सुपर ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील। सुपर ऑक्सीडाइज मींस जिसके जो सल्फर और फ्लोस्फर जो है बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में है, एंड इज 0.005, 0.001। सो एंड 6 S31254 also है सुपर ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील। उसका सुपर ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर when you have a requirement of high hygiene, high say corrosion resistance, and you have a reactors बनाना है, इसका आपको जो कुछ contaminants नहीं होना चाहिए, उसके लिए जनरली सुपर ऑक्सीडाइज स्टेनलेस स्टील का है। Where to oxidic stainless steel again, super oxidic stainless steel starts. Now 316 is a popular corrosion resistance grade. So what is the difference between 304 and 316? Basic है 304 जो है निकल और 80% chromium, 8% nickel, and we have in a 316 we have molybdenum. So molybdenum take care of the pitting corrosion. जो stainless steel corrosive मीडिया particularly chloride ion में expose रहता है, इस पे मीट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए there is a molybdenum. And you also know the result between the L
एक भी आपको मालूम है जो नॉर्मल ग्रेड है इसमें 0.08% कार्बन रहता है, पर जो एल ग्रेड है पर्टिकुलरली इसमें 0.03% मैक्स कार्बन। क्यों? क्योंकि उसका वेल्डेबिलिटी के साथ कनेक्शन है। ठीक है, वो उसके आगे बात करते हैं। तो अगर अब 304 which is without molybdenum, but 304L is low carbon grade. 321 is a stabilized steel. Stabilized steel मतलब इसमें titanium फिर another stabilized steel 347 नया भी होता है, क्योंकि जब स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग होता है जैसे कि 3046 there are chances that वो आफ्टर वेल्डिंग वो सेंसिटाइज हो जाए। सेंसिटाइज मतलब ऐसा बीमार हो जाए। चलिए ऐसा बीमार वाला स्टील जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इट्स कॉल्ड इम्यूनिटी लाइक। तो वो कोरोसिव एटमॉस्फेयर में ऐसा स्टील अगर यूज हुआ एक्सपोज हुआ तो इसमें जल्दी कोरोसन हो जाता है। इसीलिए ऐसे स्टील का टिटेनियम और नाइट्रियम डालते हैं, उसका भी हम मेटलर्जिकल क्यों डालते हैं वो भी एक्सपेक्टेड जल्दी हो गया। 308 है वो वेल्डेड का कंवर्जन है। 308 304 के लिए यूज होगा वेल्डेड कंवर्जन। देयर वी हैव 347 अगेन 321 3। अच्छा 321 और 347 आपने यूज किया है? Have you used 321 347 for any of your application? Okay, चलिए जो हाई डेमर का सर्विसेज है, ठीक है, इसमें जनरली 321 347 इज रिकमेंडेड। इसमें टिटेनियम नाइट्रियम रहते हैं, उनके जो कार्बाइड्स रहते हैं that give sufficient liquid strength. Then we have a free machining grade, not just going for welding purpose, because इसमें selenium, tellurium, so आप इसे स्टील को इजीली मशीनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, right? And you have some 302H2 low hardening, but our interest हमारे जो welding और fabrication के लिए जरूर जो interest है वो 304 31 304L 316 316L, right? And 321 347 लेकिन सारा पॉजिटिव का फैमिली है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील फैमिली इज 430 409 is a very popular game 409. Then we have a minus stainless steel. Minus stainless steel again are typical problem base तो इसमें ले सकते हैं जो मार्केट स्टेनलेस स्टील है, राइट? इट इज फॉलोइंग इन जिस ग्रीन कलर, सो हाई क्रोमियम एंड लेस निकल। बिकॉज हम लोग आगे देखेंगे कि क्रोमियम का क्या रोल रहता है, निकल का क्या रहता है। सो दैट इज व्हाई इट इज डिसाइडेड बाय दिस। फिर हम लोग इसमें 420 पॉपुलर जो ग्रेड है प्लस 410 ऐसी ग्रेड है, 440 है, 440 भी 440C वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रेड है। है कि अगर कुछ इम्प्लांट्स कुछ बायो इम्प्लांट्स के बनाने हैं पार्ट्स, अदरवाइज हाई कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए तो 440 है, 440B, 440C तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सारे उससे बनते हैं। तो हर एक फिर ये डुप्लेक्स टेंडेंसी इज दिस रीजन, राइट? आपका 22% जैसा क्रोमियम रहता है एंड यू हैव 5 to 7% है जिनको right? Now, डुप्लेक्स टेंडेंसी में जो like 304 205 सुपर डुप्लेक्स ग्रेड, अभी हाइपर डुप्लेक्स में तो डुप्लेक्स टेंडेंसी जैसे कहा कि जहाँ सब सर्विस एनवायरनमेंट है, जहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, जहाँ क्लोरीनेटेड डिपार्टमेंट है, तो ऐसा यूज में डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। तो कहना यह है कि हर एक स्टेनलेस स्टील एनी स्टेनलेस स्टील का जो वेल्डिंग भी है कि वो बहुत डिफरेंट है हर एक चीज का। स्टेनलेस स्टील जितना इजीली वेल्ड हो सकता है फिर भी कॉम्प्लिकेशन है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है उसको भी वेल्डिंग करने के लिए बहुत टेक केयर रखना पड़ता है। फिर जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है आर्टिफिशियल ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, तो हर एक चीज का क्या है इसमें कुछ ना कुछ खास रहता है जिसको आपको टेक केयर करना है, राइट? सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या करना है। तो भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, व्हिच आई हैव ऑलवेज नो क्वेश्चंस। आई ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद द पीपल बिकॉज़ इट्स माय लर्निंग ऑलवेज। व्हेन ये सब आपके कोई भी क्वेश्चन में इज मेरा ही लर्निंग की इस पे कुछ सीखता हूँ, ठीक है ना? अभी what this? Yes, sir. It's I only got from one I think should what was spent this is what's up and must have brought cake is very on Saturday and she'll tell her
तो कैसे में कौन सा वेल्डिंग एंड कैसे चलता है सो वैसा इट्स ए वेल्डिंग फ्रेंडली ग्रेड इज ए ऑस्टेटिक स्टेनलेस स्टील 304L 316L देयर आर वेल्डिंग फ्रेंडली ग्रेड which ज्यादातर इसके कंज्यूमेबल्स की बहुत इजीली अवेलेबल हैं और तो मार्केट में भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हैं एंड देयर आर any popular fabrication industries along welding consumer manufacturers are packing. So 304L, 316L, 321 it's giving some problem. 321 में जो titanium होता है उसके लिए कभी भी titanium वाला इलेक्ट्रोड यूज करें उसके लिए 347 कंज्यूमेबल यूज करेंगे क्योंकि जो टिटेनियम है उसमें कभी उसका कंज्यूमेबल से क्या होगा उसमें जब आग बढ़ेगा ये टिटेनियम ट्रांसफर नहीं हो सकता है उसका ऑक्साइड मिल जाता है टिटेनियम डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसके 321 को वेल्ड करने के लिए 347 आई कंज्यूमेबल लगाएगी ठीक है 321 and 347 they can be weldable so they can be weldable with some care okay they are precipitation they are also stabilized with stainless steel इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन से वेल्डिंग है जो आगे डिस्कस करेंगे शायद किसी को सुना हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस का नाम है I988 मतलब आपको जो ऐसे क्या मालूम है जो वेल्डिंग के बाजू में जो हीट इफेक्टिव जोन एरिया है तो फ्यूजन और हीट इफेक्टिव जोन एरिया में जो वो एरिया में बिल्कुल नाइफ जैसे छुरी कैसे का लगाई वो जैसे डेली की क्रैक हो जाता है तो 321 and 347 they are suffering from I988 उसका भी मेटलर्जी हम लोग करेंगे डिस्कस Sure. Then I just aim a bit for the best. But the defects status क्या है वेल्डिंग में वो भी वेल्डेबल है अच्छी तरह से वेल्डेबल है उसमें जो चीज बेटर करनी चाहिए हैंडलिंग वो हम इसमें कर लेंगे डिस्कस टाइप में करनी चाहिए कि I have a points in our presentation कि सर को एक so defect status welding is also not straightforward because just like Australian stainless steel because there are complications like when you know ferrite problem ferrite specifications if the ferrite are low there's like 35 maybe issues with the ferrite are more 65% more than 65% there are issues so ferrite control and you have a two-phase control you need two instruments you know control two-phase oscillated ferrite दोनों फेस का तो कंट्रोल करके रखता है उसके लिए हीटिंग को कंट्रोल भी रखता है उसके लिए कंज्यूमेबल उसके लिए शिफ्टिंग गियर्स वो सारा एक एक करना पड़ता है सो स्टेप सीखिए उसको भी मैं आपको इसमें कवर कर लूंगा तो क्या प्लान किया है इसमें ही प्रेजेंटेशन में ओके तो पार्टिसिपेट को फेरेटिक स्टेटस पे अपने बहुत टीम नहीं करते हैं बिकॉज फेरेटिक स्टेटस जो है वो जनरली जब आपको हाई टेम्परेचर या फिर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए हाई कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए फेरेटिक स्टेटस विल बी यूज्ड और जहाँ भी आपको जैसे कि आपका मोटोबाइल के एग्जॉस्ट सिस्टम है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे आपका एग्जॉस्ट निकलता है हाई टेम्परेचर वहाँ फेरेटिक स्टेटस कैन बी यूज्ड अदरवाइज फेरेटिक स्टेटस most of the time use authenticated duplex duplex is huge market and for diverse applications they are in use right okay so कोई question है तो please feel free to answer okay हम लोग के बेसिक्स समझते हैं ठीक है तो बेसिक्स समझते हैं कि भाई स्टेनलेस स्टील देखो अभी ऐसा है कि जब आए मतलब एसी ग्लोबल ठीक है जब उसमें 12% से ज्यादा क्रोमियम एड होता है ठीक है तब उनके सरफेस के ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड तो जिसे क्या हमारे पास कार्बन स्टील है तो कार्बन स्टील है तो कार्बन स्टील के ऊपर जो ऑक्साइड बनेगा वो Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe2O3 Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड उस टाइम ऐसे करके लेयर्स बनेंगे जिसको आप आयरन ऑक्साइड्स बनेंगे उनका जो लेयर है वो बिल्कुल नहीं है उनकी जो ऑक्साइड से बिल्कुल नहीं क्योंकि क्या है कि वो बढ़ता ही जाता है जब जिस टाइम बीतता है तो वो कार्बन स्टील है वो कंज्यूम हो जाता है उसके ऊपर जो ऑक्साइड है वो बढ़ता जाता है तो शुरुआत आयरन ऑक्साइड्स होती है FeO जिसको प्रोस्टाइन बोलते हैं फिर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड
नेसेसिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड जैसे भी। तो स्टेनलेस स्टील जो है तो उस पे जब क्रोमियम और निकल हमने पहले देख लिया वी से alloy of nickel and chromium. तो whenever the nickel and chromium are added, a basic film is formed. तो जो इसमें फिल्म बनती है वो chromium oxides की बनती है Cr2O3. तो वो फिल्म कैसी होती है? फिल्म जो है वो continuous है. That film is continuous. That film is non-porous. इसको porosity नहीं होती और उसको बोलते हैं उसको टेंसी की अच्छी होती है बस उस पे अच्छा स्टेकी होते हैं एडल्ट को होता है कि वो बेसमेंट के साथ अच्छा उसका बॉन्डिंग होता है। तो जो स्टेनलेस स्टील की जो फिल्म है ऊपर नेचुरल फिल्म इसीलिए उसका नाम होता है रेजिस्टेंस टू डिस्कलरेशन व्हाट आती है स्टेनलेस। तो स्टेनलेस प्रॉपर्टी कहाँ से आई? स्टेनलेस इज अ रेजिस्टेंस टू डिस्कलरेशन। तो इसके डिस्कलरेशन नहीं होता है because of this chromium oxide film, right? तो big chromium oxide film उसको high temperature oxidation resistance बनाता है, right? तो उसकी strength और ductility भी very है and fabricability अच्छी है, fabricability and weld अच्छी है उसकी, right? तो जो stainless steel में कुछ हम समझेंगे कि carbon steel में chromium डालने से फायदा नहीं है, फायदा है nickel chromium आयरन हॉलो है उसमें देखो मतलब जब क्रोमियम वेट होता है तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड जो बनता है Cr2O3 फिल्म वही फिल्म को प्रोटेक्ट करती है तो दैट फिल्म इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम रस्टिंग टू द कोरोजन। तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ये स्ट्रक्चर के बारे में देखो आपको शायद नॉर्म पे जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तब यहाँ तो पीपल भी है तो वो लोग अभी तो उनका भी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म भी होगा आप लोग प्रैक्टिस इंजीनियर है तो आप लोग बहुत साल पहले पढ़ लिया होगा तो जो फेराइट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बॉडी सेंटर ट्यूबिंग स्ट्रक्चर पीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें बॉर्डर आइटम्स होते हैं 8 बॉर्डर उसमें एक सेंटर में एटम होता है बॉडी सेंटर के बीच में वही पीसीसी में अगर निकल ऐड करो निकल तो आपका हो जाता है फेस सेंसर। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो फेसिस है 8 फेसिस 1 2 3 4 5 6 फेसिस का तो सभी फेसिस है देखिए सभी फेसिस के ऊपर भी एटम्स अरेंज्ड है तो वो हो जाता है स्ट्रक्चर हो जाता है ऑस्टेरॉइड। और निकल का रोल किससे रहता है? आप नीचे का स्लाइड देखो कि जब आप 1% से ज्यादा निकल वेट करते हो मोर देन 8% तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है ऊपर बात ऑस्टेरिटी। तो राइट हैंड साइड है दिस वन ऑस्टेरिटी स्ट्रक्चर दिस वन बट इफ यू हैड 5% निकल 8 से कम 5% then you have a combination ferrite with austenite तब क्या होगा आपका दोनों फेस का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। अभी देखो समथिंग लाइक दिस जो फेराइट और ऑस्टेनाइट है दोनों का एडवांटेजेस है और फेराइट है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है ऑस्टेनाइट है वो डक्टाइल है ऑस्टेनाइट क्या उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है उसमें स्ट्रेंथ मतलब आप ऐसा समझो कि डक्टिलिटी अच्छी है तो आप उसके जो प्लेट्स है उसको बेंड कर सकते हो उसको शेप इजीली दे सकते हो। वो जो आपको कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए वो आपका फेराइट में मिलेगा। तो यू हैव एडवांटेज ऑफ टू फेस फेराइट एंड ऑस्टेनाइट आपको दोनों फेस का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको डुप्लेक्स में मिलेगा राइट। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इज दे आर डिजाइन्ड फॉर स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस उसमें स्ट्रेंथ भी है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी है राइट। पर ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील जिसका आपको 8% से ज्यादा निकल है तो पूरा वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। अभी ऐसा नहीं ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर तो सब है उसकी ब्यूटी है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वो भी डक्टाइल है उसका भी कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है वो भी स्टेनलेस प्रॉपर्टी अच्छी है कि जब आप स्टेनलेस स्टील यूज करने जा रहे हैं तो उसमें आपको टेक केयर करना पड़ेगा और स्ट्रेस कोरोजन रेजिस्टेंस का एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस का ठीक है। बट जो ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील में इसमें आपको वेल्डिंग जो कंट्रोल है वो वेल्डिंग कंट्रोल पैरामीटर में कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो आपको हीट इनपुट पे लाना पड़ेगा दूसरा इंटर पास टैपिंग इसकी हम बात करेंगे बाद में ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर का आप समझ लीजिए ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जनरली डीकर एंड होने से ऑक्सीडेंट बनता है और 5% डीकर जब जाता है तो अपना दोनों फेस को कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं समझ में आता प्लीज आप बोलना, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील में माइक्रोस्ट्रक्चर्स इसका क्लासिफिकेशन है, माइक्रोस्ट्रक्चर्स है। आप फर्स्ट फिगर देखो, वो है हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील। माइक्रोस्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील में आप देखो कि इसमें क्रोमियम ज्यादा रहता है। इफ यू रिमेंबर अवर फर्स्ट टाइम, तो हमें देखा था कि माइक्रोस्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम ज्यादा है, तो जब लो आयन क्रोमियम का अलॉय है, आयरन एंड क्रोमियम बोला, इसमें निकल नहीं रहता है। तो जो स्ट्रक्चर रहता है वो सारा फेरेटिक स्ट्रक्चर रहता है, फेरेट स्ट्रक्चर रहता है। दूसरा जो है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, जिसमें जो फेरेट्स वो भी आयन क्रोमियम का रहा है, ठीक है। देयर इज आल्सो आयन एंड क्रोमियम बोला है। तो डिफरेंस क्या है मार्टेनसाइट और फेराइट में? तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में ऐसा है कि इसमें थोड़ा डीकर केड रहेगा। वो डीकर क्या करेगा, वो डीकर ऑक्सीडेंट बनेगा। वो ऑक्सीडेंट जो है जिसका जब हम पुलिंग होगा तो वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो उसकी कुछ आप ऐसे समझ लो कि जो मार्टेनसाइट, आपने तो नाम सुना है मार्टेनसाइट, तो मेटलर्जिस्ट वाले को भी मालूम है कि जो मार्टेनसाइट में सबसे हार्ड फेस है, सबसे हार्ड, वो प्रॉब्लम करता है कार्बन स्टील में भी, और ये आपके फेरेटिक और मार्टेनसाइट स्टील्स। ऑक्सीडाइज्ड स्टील में मार्टेनसाइट होता है नहीं होता है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेनलेस स्टील में फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू रूम टेम्परेचर, सॉरी यस, फॉर मेल्टिंग टू रूम टेम्परेचर और डेजर्ट रूम टेम्परेचर सब 0 तक एक ही स्ट्रक्चर है ऑक्सीडेंट, ऊपर से नीचे तक ऑक्सीडाइज्ड स्टेनलेस स्टील। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मार्टेनसाइट। तो इसमें कभी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने वेल्डिंग कर दी और उसका हेस एरिया में हार्डनेस ज्यादा आ रही और टूट गया। नेवर, इट नेवर हैपेंस, कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज्ड का जो कंपोजिशन है वो ऐसा बना है कि आपको इसमें पूरा रूम टेम्परेचर तक आपको एक ही फेस मिलेगा, सिंगल फेस ऑक्सीडाइज्ड। अभी डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स की जैसे बात किया है, दोनों फेस को कॉम्बिनेशन में फेराइट भी है और ऑक्सीडाइज्ड भी है। उसको फेरेटिक ऑक्सीडाइज्ड स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। फेरेटिक ऑक्सीडाइज्ड स्टेनलेस स्टील में टू फेस स्टील। अभी उसका ब्यूटी का जैसा कि ये सारे माइक्रोस्ट्रक्चर है, वो सारे बेस वेल्डर के माइक्रोस्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी जब उसका वेल्डिंग करेंगे तो because of the welding microstructure is likely to change. Microstructures में change होगा। कैसे, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ 50% स्टेराइड, 50% ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा तो रोलिंग मिल में बनता है। जेम्स मिल से, नेम से, जो भी डिपॉजिट जहाँ से जहाँ स्टील आता है, लेकिन इसमें जो डुप्लेक्स का रहता है वो 50-50 फेस बैलेंस रहता है। 50% ऑक्सीडाइज्ड, 50% फेराइट। पर द फेस बैलेंस वो डिस्टर्ब हो जाता है कब, जब उसका वेल्डिंग होता है। कब वेल्डिंग होता है, अगर उसमें 35 होता है, 35 65 45 55, राइट, 65 35, क्योंकि जो रेशियो है वो सारा चेंज हो जाता है, अपसेट हो जाता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, राइट। तो वही हमको बैलेंस करना है वेल्डिंग से, कि वेल्डिंग को ऐसे टेक केयर करना है कि उसका जो फेस बैलेंस है वो मेंटेन रहे। इट मींस वी गेट द स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम, we can use strength at the same time corrosion resistance, right? Last year of precipitation hardenable grade strength है। Precipitation hardenable grade strength means इसमें क्या होता है कि देखिए कि ट्रीटमेंट के बाद, जब आप ट्रीटमेंट के बाद उसके जो ग्रेन्स है, जैसे कि यहाँ जो आप दिखा है जो ऐसा ग्रेन के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होती है। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे करके स्प्रेड होते हैं। उससे क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, ठीक है ना। उसको बोला प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। उसके 74 pH, मतलब 17% क्रोमियम, 4% दीगर pH, मतलब प्रेसिपिटेशन हार्डनेबल। फिर है 77 pH, 30% क्रोमियम, 7% दीगर। तो उसमें 2 ग्रेड प्रेसिपिटेशन हार्डनेबल में, ये 74 pH है, वो हमारा मार्टेनसाइट ग्रेड है। उसको कूलिंग होता है, वो मार्टेनसाइट बनता है। और 77 pH है, ये हमारा सेमी ऑक्सीडेटिव जिसको बोलते हैं, सेमी ऑक्सीडेटिव। दो टाइप के, और मार्केट में 2 टाइप के अलग अलग
बहुत कम उसका प्रेसिपिटेशन हाइड्रोकेबल ग्रेड का यूज होता है. जनरली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन more than 400-500 डिग्री सेल्सियस. जनरली डुप्लेक्स को कब तक यूज कर सकते हैं? डुप्लेक्स का यूज कब तक हो सकता है? डुप्लेक्स मैक्स टू मैक्स 300. 300 के बाद ज्यादा उसमें प्रेसिपिटेशन आ जाते हैं. सिग्मा प्रेसिपिटेशन, चाइल्ड प्रेसिपिटेशन, अल्फा प्रेसिपिटेशन, उसकी भी बात करते हैं. ठीक है ना? फिर लोअर टेम्परेचर में डुप्लेक्स का यूज किया -46 तक. -46 तक ज्यादा स्टेरिस्टिक को यूज नहीं कर सकते. और ऑक्सीडिक स्टेरिस्टिक, ऑक्सीडिक स्टेरिस्टिक का माइनस में कितना कर सकते हैं? माइनस में क्रायोजेनिक सर्विस के लिए इसी का आइडिया -196, राइट? तो -196 यू कैन यूज ऑक्सीडिक स्टेरिस्टिक फॉर क्रायो सर्विस एप्लीकेशन. तो उनका जो कोड है उसको वही बोल रहे हैं आपको -196 बोलता है. जो उसके इफेक्ट टेस्ट लेंगे उसके जो डेकल एक्सपांशन होना चाहिए वो 0.38 mm आता है, राइट? तो उसके स्पेसिफिकेशन है. तो फेल्टिक स्टेरिस्टिक हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन you can use 800 degrees Celsius comfortably. Water-based statistics have a different usage. They have a water-based statistics porous resistance, high porous resistance applications, right? So different skills, different welding behavior, different welding techniques, और otherwise parameter controls, वो सारे applications हैं, right? तो स्टेनलेस स्टील है उसका क्लासिफिकेशन इज बाय माइक्रोस्ट्रक्चर लाइक वायरस केस. ठीक है? तो माइक्रोस्ट्रक्चर का ये एक बेस मेटल माइक्रोस्ट्रक्चर्स है. जैसे बोला कि जब उसका वेल्डिंग होगा एंड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी चेंज, राइट? अभी कुछ ये हम उसको फेज डायग्राम बोलते हैं. तो फेज डायग्राम थोड़ा सा भारी चीज है कि जो मेटलर्जी वाले होता है तो वो भी उसको इजीली इतना मतलब यहाँ मेटलर्जी का है. एक हमारे डॉक्टर बदीका सर है, मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. डॉक्टर बदीका सर इज ए वेल नोन रिसर्चर्स फ्रॉम द PDU इंस्टीट्यूट गांधीनगर. सो ही इज इनटू वेल्डिंग फील्ड. ही इज ए वेरी सीनियर फैकल्टी और वो का रिसर्च बहुत हर एक बटल में है ऑलमोस्ट. का इंस्टीट्यूशन है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग दिस इंस्टीट्यूशंस को. हमारे एक साथ में जिसको मैं जानता हूँ मिस्टर संदीप आर्य जी है, वो भी मेट्रोलॉजिस्ट बैकग्राउंड से है, उनका भी स्पेक्ट्रोमीटर से है. एंड any one of you maybe I might not be knowing, but you may be representing a very good industries and academias. अच्छा, ये जो माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा ये साथ इसमें हम देखा किसी का मार्टेन सेंड होगा, किसी का फेरेट होगा, किसी का ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर जैसा होगा, इसमें फेरेटिक ऑस्ट्रेलियन दो फेज नोटिस हो गए, और किसी में ऐसा बना के जो मार्टेन सेंड जैसा ही दिखता था बट इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटेड हुए. ठीक है? तो वो सारे चीज होता है निकल और क्रोमियम, कार्बन, आयन, निकल और क्रोमियम. वही चार अलग एलिमेंट है जो सारा माइक्रोस्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. ठीक है? तो मैं उसको ज्यादा उसका मुझे वर्किंग नॉलेज आई वुड लाइक टू गिव यू वर्किंग नॉलेज उसकी ज्यादा को देखो. ये पहला जो डायग्राम है, ठीक है, सबसे पहला जो वर्किंग है आप इसमें देखेंगे ना, तो आपने लोग आयन कार्बन डायग्राम स्क्रीन पे बनाओ. आपको मालूम है कि जिसमें कार्बन परसेंटेज एक्स एक्सिस पे होते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा आयन होता है, राइट? तो एक पर्टिकुलर फेस एक टेम्परेचर के साथ साथ बनता है. ठीक है ना? तो वो जो फेज है इसमें आप यहाँ पे फोकस करो. ये जो पर्टिकुलरली ये फेज है जो जनरली यहाँ 723 से आप ऐसा करोगे यहाँ अप टू 910 हमने दिया. सो 723 से यहाँ 1140 यहाँ तक जो फेज है पूरा जो ऑस्टेनाइट, राइट? नाउ दिस ऑस्टेनाइट फेज, ठीक है ना, यहाँ पे जो होगा वो एक ये पर्टिकुलर सेक्शन में उसको बोलेंगे फेराइट, जो जनरली रूम टेम्परेचर ये उधर होगा 910, ठीक है, यहाँ
सॉरी दिस एज जहाँ पे बिल्कुल कम कार्बन है, वेरी लेस कार्बन इज देयर. नाउ दिस ऑस्टेरेट इज बीइंग एज्ड. ऑस्टेरेट का क्या होगा कि ऑस्टेरेट की जो पूरा फैला हुआ है, ये सारा ऑस्टेरेट फैला हुआ है ना, वो ऑस्टेरेट कंट्रोल में आ जाता है, एक लूप बन जाता है उसका. ये जो लूप है वो किसके कारण होता है? जब इसमें निकल ऐड होता है. तो जो आयरन क्रोमियम जो है, ठीक है ना, आयरन क्रोमियम जब वो निकल ऐड करते हैं, राइट, तो निकल के कारण क्या होता है, वो ऑस्टेरेट का स्टिक होता है. एंड यू हैव दिस डायग्राम आयरन निकल क्रोमियम. इसमें देखो आयरन निकल क्रोमियम में ये जो पूरा जो बेल्ट है, सिर्फ ऑस्टेरेट, ये पूरा बेल्ट हमारा सेकेंड है, और ये दोनों के बीच में जो फेस स्ट्रक्चर है, ये हमारा डुप्लेक्स है, राइट. तो जनरली क्या कंट्रोल होता है? जनरली जो ये तो सिर्फ आयरन और कार्बन का रिलेशनशिप है. ये है हमारा आयरन और क्रोमियम का, ठीक है, जिसमें मिनिमम यहाँ जब देखो 12% क्रोमियम, 12% क्रोमियम से जो फेस बनता है फेराइट, राइट. फेराइट फेस इज नाउ स्टेबल अप टू द रूम टेम्परेचर. नाउ व्हेन निकल इज एडेड, ज्यादा निकल एड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट टू रूम टेम्परेचर आपका ऑक्साइड स्टेबल हो जाएगा, राइट. एंड जब उसमें 22% क्रोमियम होगा, 8% निकल होगा, एट द सेम टाइम यू हैव अ टू फेस स्ट्रक्चर, राइट. तो ये डायग्राम जो बनता है वो सारा निकल क्रोमियम के अलॉय से मतलब जो स्टील बनता है माइक्रोसेक्टर जो डिसाइड होता है वो निकल और क्रोमियम के परसेंटेज उसका एलोइंग से बनता है, राइट. तो ये माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं सारे लोग, ठीक है. तो माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसे डिसाइड होता है. नाउ अभी अपने लोगों ने पहले जो साइड था इंट्रोडक्टरी साइड, उसमें बहुत सारे स्टेनलेस स्टील का वेट देखने के ग्रेड्स, जैसे कि एक सर 304. अच्छा, इसके पास हाइट काफी सारा It is what is the role of nitrogen? yes, role of nitrogen is very question sir. नाइट्रोजन जो है उसमें डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में उसका रोल है बहुत ज्यादा रोल है. डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ऑक्साइडिक स्टेनलेस स्टील में भी है, और ये जो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में भी है. आई विल बी कमिंग टू दैट. एक्चुअली नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड फेस को स्टेबल बनाता है. तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन उसका ये जो टेम्परेचर से उसमें फेराइट से ऑक्साइड ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो टेम्परेचर इसमें राइज करेगा. तो ऐसा करेगा कि जब आपका स्टेनलेस स्टील का जिसका वेल्डिंग बना है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का आपने वेल्डिंग बना है, तो जब वो कूलिंग होगा तो अर्ली उसमें ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा नाइट्रोजन से. इसलिए आप देखा जाए 2205 ग्रेड है, 22 क्रोमियम 5% निकल, इसमें जनरली .082.14 तक नाइट्रोजन आपका होगा. क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड अर्ली स्टेज पे बनाना शुरू कर देगा. तो आपका है कि ऑक्साइड ऑफ फेराइट का जो फेस बैलेंस चाहिए उसमें ज्यादा आपको ऑक्साइड चाहिए. 35% you need ferrite to 65 and more you less you need oxide. So nitrogen helps in ferrite formation in early stage during cooling of the bed. This ये नाइट्रोजन स्टेबलाइजर पे काम करता है. यस, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड स्टेबलाइजर पे काम करता है. फिर अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स अब लोग देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एलिमेंट है जो ऑक्साइड को स्टेबलाइज करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक एलिमेंट है जो फेराइट को स्टेबलाइज करते हैं. यानी देखो जब हमने कुछ जो मैंने देखा जो वेल्डिंग का जो ये जो बेस मेटल का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जब हम वेल्डिंग करेंगे एट द टाइम ऑफ वेल्ड कूलिंग, तब वेल्डिंग जब कूलिंग होगा तब इसमें बहुत सारे मेटलर्जिकल फेनोमेना बहुत सारे मेटेरियल चेंजेस होंगे. मेरी मेटलर्जिकल फेनोमेना भी लगा. तो दिस फेनोमेना वी विल डिस्कस क्या क्या हो सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन इंट्रोडक्शन के पार्ट में तो इसमें हम लोग वो करेंगे डिस्कस. तो आपका क्वेश्चन है नाइट्रोजन हेल्प्स इन ऑक्साइड फॉर्मेशन और स्टेबलाइजिंग ऑक्साइड. ओके, अभी दिस ऑल ऑक्साइडिक स्टेनलेस स्टील फैमिली, यू कैन से दिस फैमिली इज वेरी एवरीवेयर. देयर इज सम रोल ऑफ निकल, रोल ऑफ मैंगनीज आल्सो, रोल ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम, बीटी कॉलम रेसिस के लिए जिसको हम लोग को पहले देखा 304 और 306. इसमें मोलिब्डेनम में डिफरेंस है, राइट. फिर देयर आर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ भी नाइट्रोजन है,
nitrogen added 304 cells, nitrogen added increased nitrogen. Right? So, copper का भी बड़ा रोल, right? तो इससे मेन प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव है वो नॉन नेगेटिव है. इसके उसका क्राइटेरिक एप्लीकेशन, फिर उसका एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट, फिर उसके बीकर और क्रोमियम, राइट? मेन ऑर्गेनिक है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, गुड नेगेटिव प्रॉपर्टी है से, एंड आईपीपी स्प्रेड और आल्सो क्राइटेरिक स्प्रेड टू माइनस 1. वो कितने तक यूज कर ऑक्सीडेटिव स्टेरिसिल को -196 तक, अब तो -100 क्राइटेरिक प्रॉपर्टीज भी है, राइट? सो पर उसका मेन जो शुरू में डिस्कस किया क्लोराइड हैंड स्ट्रेस कोरोजन टेक्निक एंड बीटिंग कोरोजन. तो ऑक्सीडेटिव स्टेरिसिल की जो एनिमी है वो जनरली क्लोराइड एटमॉस्फेयर में, राइट? ओके, नेक्स्ट देयर आर the AWS का वेल्डिंग हैंडबुक है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का, और ASMP मेटल्स है, इसमें से ये टेबल भी है. तो ये सारे ASI की मतलब स्टेनलेस स्टील है जो 200 से स्टार्ट होते हैं. And you can see the all of chromium that the 70% is made of, and you have 60 to 80 chromium and nickel percentage, right? 8%. 89 is the basic series, right? And you have a molybdenum in the 303 and other again quantified likewise. Now our popular rate 374, even the examples of molybdenum, right? ये इसमें molybdenum नहीं है हमारा 304. जब आपको ज़्यादा अगर 304 और 304L 0.08, there is a 0.03 blue carbon green 304L, right? Getting this around that. See, 316 का वेल्डिंग जैसे this one 316, but 316 stop that, take it 316 का 316 का वेल्डिंग. So for this 316 का वेल्डिंग में 316 L का ID that product the value और इसमें next पे the next idea series is very big, right? I could show up to 4M, but the family is very big, so you can see 304 and 310F, then the 316, 316L. So there are many series, right? So 316L के लिए जो कंज्यूमर है वो 316L ही है, और कई कंज्यूमर 304 के लिए इसमें 8 आप यूज करते हैं, right? And you know इसमें मेन जो अलग एलिमेंट्स है, सब में you can see in 321 तो हमने शुरू में डिस्कस किया. एक को स्टेबलाइज है, so there is a presence of titanium, right? And 347 there is a presence of Columbia Arabia, right? Columbia or Tectana, Columbia or Niobium, right? CB or Niobium, those same ही उसको. Okay, next is a family of ferritic stainless steel. Ferritic stainless steel is a magnetic in nature. It gets attracted to magnet, right? And there is a nickel and chromium. Those are the crystals here. Not suitable for high temperature application. Application subject to 435 embrittlement. जिसके हम बात करेंगे, we'll talk about this cave, or there is a phenomena 475 embrittlement, particularly in ferritic stainless steel. Why? वो एक diagram के साथ बात करेंगे इस पे. Okay, next to it, this is a standard chemical composition of ferritic stainless steel. Again from the standard welding handbook and the biology. So popular grade is 409, also that used in the industry 401, 409. Yeah, right. Now this is a family of artisanal stainless steel. So magnesium stainless steel. Right, sir. Again, the popular grade is 410, general purpose, but 440A, 440B, 440C for surgical medical applications, high corrosion resistors. Alternative stainless steels are magnetic in nature, right? And they are unreadable and difficult to weld. Easy is also stainless steel. Less is duplex stainless steel. Or ferritic and artisanal stainless steel are rather, you need some precautions in welding. You need a proper WPS. You need a proper, parameter control. The techniques to weld ferritic and artisanal stainless steel. We talk about this.
Okay, so this is a chemical corporation of some important mathematics and statistics. Okay. Okay, now talking about the defects chemistry, where the standard, base metal is 50-50, right? 50% of cement, 50% ferrite. But it has rolling wheel when still comes to us, right? But when it gets welded, the bike structure is no more 50-50. It is either 35-65, right? The P2 is so phase balance this stage. So it can be called proper phase balance. It is. So why it happens? वो क्यों हो जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे with diagram. So there are started in a lead defects stainless steel. There is a presence of known nickel, and these are the lead defects stainless steel. There are standard defects stainless steel. So latest is S1885, S38803, and this material because someone has questioned about the nitrogen, right? Because there was less nitrogen in this base metal. So the weldability, this series has been discontinued by many worldwide manufacturers, Motor Combo and this Xanthi. They have now finalized S225 grade only in the market. Then we have super dupex stainless steel where 25 chromium and high nickel, 7% nickel is available, and we have hyper dupex stainless steel. So dupex stains are magnetic in nature, they get saturated to magnet. Then corrosion resistance, fatigue resistance, chloride, service atmosphere. So there is a compound PR in a fatigue resistance equivalent number. So stainless steels again we will see in our next, not next slide, but in later. And PRE number generally oxidative stainless steel have PRE number 20, but stainless is PRE number increases. It is a fatigue resistance equivalent number. So means all PRE number, high PRE number, high resistance to corrosion. Right? 38, 40. Again, you go for super dupex stainless steel. 48, 15 likewise. So when we have soft surface application, hydrogen sulfide, chloride, aggressive atmosphere, chloride atmosphere, duplex stainless steel is the only candidate here, right? Okay. But there is the issue with duplex stainless steel, 435 mm. That we also going to be discussing. Okay, these are some technical composition of a popular or ordinary grade of duplex stainless steel. These are in name of their manufacturers, scientific name. Again, scientific name is Sumitomo, Japan name, Sumitomo DP3 grade. So these are some proprietary grade duplex stainless steel materials, like their chemical operations. So here the noteworthy you can see is the chromium percentage, nickel percentage, and somewhere here you have an iron molybdenum, like we see that is for at 3.5, here 3.5, next 3.5, to make care of fatigue corrosion, right? And also presence of nitrogen, 0.17, 0.17, 0.14, right? To take care of the yes balance. Next is a precipitation hardened stainless steel. So precipitation hardened stainless steel, there are two types. There are based on treatments. Single treatment, there are entirely microstatic type. Double treatment is semi-oxygenatic type, where you have a single treatment, you have 4 of nickel, and in a double treatment, you have a 7% in nickel. Because it is more nickel, so you have oxidate phase, so semi-oxidatic phase. And you have a precipitation hardening grade, there are 70 H&M, 806, and there are many grades. Okay, so right. So that continues with the different stainless steels. Now we are going to focus on the welding and metallurgy of stainless steels. So you can see the butt joint figure, right? The two plates are joined by some source of heat. Heat, it's an arc welding process, right? Now it is joined. Now, as the heat source is moving, it is a weld plant, right? Molten base cooled, right?
So in this molten pool, many things happens in a microseconds. Likewise, somewhere like you are melting consumable another things. The edges of the basement are also melting. So you are melting and for a fraction of second, solidification starts. So you are melting the solidification. There is one phenomenon. When you have a deviation in growth, as the weld cools, there is some deviation that we can manage to do in another. For जो grades बन रहे हैं, उनकी जो process है वो deviation है. Deviation से grade is there, right? तो फिर phase transformation. Phase transformation मतलब जैसे कि parent phase है, जैसे कि हम लोग parent phase को जो है वो product phase कुछ बन गया है. जैसे कि हम for example we take example of defects chemistry. तो parent phase उसका ferrite से start होता है solidification. But by the time we come to room temperature, ferrite और austenite दोनों फेज बन जाते हैं, राइट? और जैसा स्टेनलेस स्टील में तो टॉप टू बॉटम एक ही फेज रहता है ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील में. ट्यूबलेक्स में दो फेज बनते हैं. फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में फेराइट से स्टार्ट होता है और फिर से कुछ मार्टेसाइट भी बनता है. पर जो मार्टेसाइट स्टेनलेस स्टील में तो मार्टेसाइट का कभी फेराइट से मार्टेसाइट कन्वर्जन नहीं होता. फेराइट को फर्स्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर ऑक्साइड का मार्टेसाइट में कन्वर्ट होता है, राइट? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन को कैसा बोलेंगे? इट इज जस्ट अ चेंज इन द फेज. जैसे हमने देखा ना फेज स्ट्रक्चरिस्टिक. सो देयर इज a phenomenon like segregation and diffusion. Diffusion it's उसके आपको सिंपली टर्म है क्या? अपना किसने बोला क्या कि भाई ऑक्साइड फेज बनता है, फेराइट फेज बनता है. तो क्या है अलग एलिमेंट्स है उनका पार्टीशनिंग स्टार्ट हो जाता है. एक द वेल्ड इज पूरी तो निकल है, मैंगनीज है, ग्राफाइट है, नाइट्रोजन है, वो सारे लग जाते हैं ऑक्साइड फेज को स्टेबल करने में. फिर क्रोमियम है, पॉलीविनाइल है, कोलोम्बियम है, आयरबियम है, they all tend to make ferrite phase stable. तो अलग का पार्टीशनिंग स्टार्ट हो जाता है. और कुछ जो लो मेल्टिंग वाले मटेरियल है, सल्फर है, फास्फोरस है, जो हीट टेम्परेचर पे फ्रीज होते ही नहीं. They don't get freeze at this temperature, but they remain liquid till the last end of the solidification. तो क्या होगा? इससे उसका segregation होगा. सल्फर फास्फोरस उससे क्या डिफेक्ट होगा? वेल्ड सर्टिफिकेशन ट्रैकिंग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना? अभी प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यू प्रेसिपिटेट्स जैसे कि न्यूक्लियर स्टेनलेस स्टील में उसमें आयरन क्रोमियम फेज प्रोड्यूस होगा, जिसको सिग्मा बोलेंगे. विद आयरन क्रोमियम निकल अल्फा प्राइम. सो ऐसे फेजेस ये प्रेसिपिटेशंस होते हैं. लेकिन इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशंस देन वी हैव ए रिक्रिस्टलाइजेशन इन ग्रेन क्लॉथ. ठीक है, नए क्रिस्टल्स one crystal structures there is a grain is growing, green oil will grow and then embrittlement जब भी देखिए आर्टिजेटिक स्टेनलेस स्टील में चांसेस है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में चांसेस है फॉस्फेटिक गेट्स और 475 में स्टील टूटता है एट दिस टेम्परेचर बैंड, तो उसको एम्ब्रिटलमेंट फेनोमेनन है. थर्मल एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रेजिड्यूल स्ट्रेसेस. क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी है जब उसको हीट मिलता है वो एक्सपांड होता है, जब उस पे कोई कौन है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जब उसे फ्री एक्सपांड करने के मिलता है और फ्री कॉन्ट्रैक्ट करने के मिलता है तो उसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाता है. दीस आर नोन एज रेजिडुअल स्ट्रेसेस. अगर आपने देखा कि आपने स्टेटिस्टिक्स का 3 मिनट का 5 मिनट का शीट बिल्ड किया है विदाउट मेकिंग तो वो डेड हो जाता है बिकॉज डिस्टॉर्शन. तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस चला है, ठीक है, उसमें डिस्टॉर्शन कर देते हैं. तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस को कंट्रोल करने का भी एक मेथड है. पर्टिकुलरली जो डिस्टॉर्शन कंट्रोल है वो ऑस्टेनिक स्टेनलेस को बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील है वो जनरली आदत स्टील की तरह नहीं है. स्टेनलेस स्टील वो हीट रेजिस्टेंस है. जैसे जो एनर्जी फ्लो होती है, हीट एनर्जी कार्बन स्टील में इजीली फ्लो होती है. स्टेनलेस स्टील में उसका वो रेजिस्टेंस है, इसलिए वो अपने आप में हीट रखता है, इसलिए वो इजीली हीट को छोड़ता नहीं है, राइट? इसलिए उसमें बेंडिंग हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, डिस्टॉर्शन,
in thin welding of stainless steel, right? कभी आपने जो भी प्रॉब्लम टेस्ट किया कभी आप डिस्कस कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा जब जॉइंट बनता है तो क्या 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 मेटलर्जिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना? दीज आर चेंजेस और वही चेंजेस से हमारा आइकोस्टिक डिसाइड होता है, राइट? ओके, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग करते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, okay, next important thing before we start about metallurgy, what we're welding with, important thing is the dilution. Dilution is flattening thing. आपका dilution सबको को मालूम होगा dilution. इसे dilution कैलकुलेट किया है, मतलब approximate dilution से। अभी हम लोग कोई butt weld बनते हैं, ठीक है? ये हमारा एक प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है। Now we are joining this plate using some consumable and we make a joint, right? Now assuming that some contribution, some say portion contribution the plate के साथ है ना, दूसरा उसमें से आता है, वो तीसरा जो हमारा consumable है वो करता है, ठीक है ना? तो ये मेटल है, ये दूसरा मेटल है, वो हमारा consumable। तो जो हमारा जो वेल्ड मेटल बनेगा वो वेल्ड मेटल है वो एक्चुअली डाइल्यूटेड होता है। कभी भी जो कैपेसिटी होती है फिलर मेटल की, तो फिलर मेटल की कैपेसिटी हमको 100% नहीं मिलती है। इट इज नेवर फाउंड 100%, थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस बेस मेटल इनटू द वेल्ड मेटल, राइट? सो दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। So approximately the percentage dilution is equal to contribution from A plus contribution plus C divided by the wall A plus B plus C into 100%, right? अभी कुछ practical cases देखे dilution सकते हैं। Now you look at the second figure where you have no root gap. You just make a zero root gap when you start welding. Although it is an example of aluminum or like 6061 not stainless steel, but to understand the dilution. You can understand when you make a weld without root opening, you can see here there is an equal contribution of A and B into C, right? So high dilution because base metal is melted and contributing weld metal. Now in the third figure, low dilution because you have a high root gap. Root gap आप इसमें high है, तो क्या होगा? A और B से कम आपको मेटल होता रहेगा और you get the more pure chemistry of the weld filler metal. So it depends on the welding technique. When you want to be root gap, when you want to minimize the dilution, right? जब आपको dilution को minimize करना है, जब आपको जब आपको dissimilar metal welding कर रहे हैं, तो you should have some gap. आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते dissimilar metal because you have equal chances that this your weld capacity will be disturbed. लेकिन आप क्या कर सकते हैं तो इसमें रूट गैप इसका आप उसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का एक रिपोर्ट रहता है। तो डाइल्यूशन से क्या है कि जब आप ऑटोजीनियस वेल्ड बनाते हैं, ऑटोजीनियस मतलब क्या? ऑटोजीनियस बेसिकली ऑटोजीनियस मतलब आप you just keep only you just fuse the metal. You don't create the filler. You don't consume the filler metal, right? Filler metal consume नहीं कर रहे, इससे आप स्क्वायर बैक बना रहे हो। Without the WP, HFS के लिए आप metal को ऐसे fuse ही कर रहे हो। इस पे just square by 3, 5, 6 just the square configuration है। GTW का box then you fuse कर दो। इसमें क्या है? There is a 100% contribution of the base metal. But when you have some WP like P, WP or anything, right? It's a preparation of that your dilution is varying because you have some percentage of addition from your base itself from the filler metal. अभी dilution का एक concept है important है, तो जब जैसे कि fillet thread है, वो GTW और SMAP process है और ऐसा तो generally 20% comes from the base metal and 80% comes from the filler metal. But in a support welding process,
where you have a 100% dilution, right? Up to 80% of the base metal contributing. Because subazar welding, किसी में देखा है? Subazar welding आपने up किया होगा. Otherwise, you might have practiced subazar welding. You know that the arc is submerged under the bracket of the flanks. So what happens? You have a low heat loss practically. You have a high heat available to the more water heat available to the base metal. So you have base metal content is up to 80% range. Your high dilution. So depending also on the welding processes, you can control the dilution. Dilution to ऐसे भी control कर सकते हो, right? Either using GTW, SAW. Then you have a single V, square V, like I have mentioned, is an alternative square, right? Where you have a 75 to 85% of dilution come from the base metal. And here you have a 30 to 40 comes from the base metal, then 60 to 70 comes from the filler metal. Now, just look at this some practical calculation of dilution. See, your filler metal composition is carbon, chromium, nickel, and manganese. And so you have filler metal composition. Now you have base composition. Okay. Now, filler metal composition, and you have a filler metal DC and base metal DC. Now you have acid dilution. Which process you are going to use? अगर आप GTW यूज कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो कि आप 65% आपका फिलर मेटल रहेगा एंड आपका 35% बेस मेटल रहेगा. तो you multiply 165 with the filler metal previously here, and you multiply 35% 0.65 with the base metal chemistry, and you sum up this with the weld metal evaporation approximately. So there is a lot of dilution. So your weld metal composition will be somewhere around this. Likewise, right? Your weld metal composition will be like this. So it's an approximation because before you start any welding, you have some calculation in mind. Say, if I use this process, if I consider this much of dilution, इतना dilution consider करूँ, ये process करूँ, तो मेरा composition कितना रहेगा? आपको weld metal composition भी control कर रहा है. You want to check the weld metal composition. Okay. So this is about this. Abhi next, another example. The basic example of what is like half 1 mole is a roll of steel, right? 2.5 from 1 mole. Composition 2.5 plus chromium, 1 metal and 95.5 valence iron. Then you have a you want to join 316 gases. आपको 316 एसएस के साथ 2.5 1 मूली को ज्वाइन कर रहा है using a consumable ENNCR3 उससे consumable ज्वाइन करेंगे है ना. Now you consider 50% dilution from this, 20% dilution from this because these are two different base metal. Now the question is, when I say equal contribution, how will this 15 and 20%? कैसे बढ़ा? मेटलर्जी क्या है कि एक्सपीरियंस वेल्डेड टेक्निक यूज करता है. वो क्या करता है कि जब वो लो के साथ जब वो एसएस को ज्वाइन करता है तो आर्क को जनरली एसएस की ओर ज्यादा रखता है. आर्क इससे उसका बेल्टिंग ज्यादा होगा, उसका बेल्टिंग कम होगा. 20% एंड 50% एक्सपीरियंस वेल्डर नोस इसको मालूम है कि उस पर कार्बन ज्यादा है, क्रोमियम ज्यादा है, तो उसके ऊपर आर्क को डाइवर्ट करूँ, ज्यादा आर्क करो, इसमें से डाइल्यूशन होकर मेरा वेल्ड टूट जाएगा या फिर वेल्ड सही नहीं बनेगा. वेल्ड की केमिस्ट्री भी है सही नहीं बनेगी. सो दैट इज टेक्निक्स यूज्ड बाय द वेल्डर्स. या फिर उसका नीचे एप्पल जॉइंट करता है जे टेक. When you have a J is like 2 quarter crown 1 more is 316 back. Just J जो है और 316 को बना हुआ और इसको W is straight up, otherwise slope. So when you join both this, you can control the dilution likewise. So here the calculation goes like this. Calculation उसके ऐसे करके बनता है dilution के, right? So average percentage of chromium, nickel and molybdenum. Chromium is just consider 0.15 operation chromium and nickel 0.2 because 20% and rest depend chromium, nickel and molybdenum calculate. And finally
to have this operation. Problem आपका क्या होगा? Entirely 16.8 होगा. Nickel will be 14.2 and your molybdenum will be around 6.65. So this is something like weld metal chemistry. Now, when you are taking the Olympians, you also have to make your A number, right? Weld metal composition with this one, your actual weld metal analysis with you have to match with your A number, right? When you are working in a ASAP9 code. Okay, otherwise in the E9 or code, whatever code. So this is how the direction is calculated. इसको मालूम हो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं. Now it is clear. डायरेक्शन की क्या रोल रहता है? Because it is microstructure decides properties. That property decides application. So your application is very decided by the properties. A property is designed by microstructure. So microstructure ऐसे करे design. When you have sufficient chromium in your composition, 60%. We saw it. पहले देखा था. When you have a 60% chromium, your stainless steel corrosion resistance is intact. Nothing changed. You have a separate corrosion resistance. But when you have a less chromium, you have every chance of corrosion attack, heating corrosion, stress corrosion, right? So which kind when okay, so oxidate formas and ferrite formas. Like I have mentioned you that the nickel, manganese, carbon, nitrogen, cobalt, all going to make oxidate. When ferrite phase stabilizers are aluminum, titanium, vanadium, chromium, molybdenum, iron, silicon, all are going to make ferrite. So oxidate and ferrite, as I told you, partitioning of other element takes place. During the solidification, the weld बनाता है तो ये मेटा ऑफ सेगमेंट्स पार्टीशनिंग स्टार्ट हो जाता है. जो इसमें ज्यादा निकल मैंगनीज कार्बन नाइट्रोजन है वो सारा ऑक्साइड बनाने में लग जाता है. और जो एलिमेंट टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम वो सारा फेरेट बनाने में लग जाता है. राइट. सो यू हैव 11 एलिमेंट्स का ट्रांसफर एडवांस. ओके. किसी को भी क्वेश्चन बाद में एक क्वेश्चन पूछना हो अभी पूछना हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके. अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो एनालिसिस है उसके बारे में बात की होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने नाम तो सुना होगा स्कैफोल्ड डायग्राम, पिलोन डायग्राम, कभी स्टैंड डायग्राम. तो वो एक्चुअली वो लोग कौन थे? जो स्कैफोल्ड थे, डिलोन थे, हल था, वेल्डिंग रिसर्च काउंसिल WR. These were all welding researchers. They have contributed something into the welding metallurgy. How? उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने in this timeline 1949, 1956, they have gradually, it's a world war, okay, 1942, 1949. So what happened during World War II? There was a huge demand of weapons, huge demand of arms and everything. So, but at that time there was a problem related to metallurgy. So there was a huge fund given to these people in their research, and they have experimented and made certain mathematical relationship. The chromium equivalent कितना होगा? Chrome moly सिलिकॉन का 1.5% होगा, 9 का 0.5 होगा. दूसरे chromium और nickel equivalent का उससे एक क्या बनाएंगे? इक्विलेटर्स के बनाए. कौन से है जो फेरेट बनाना है, कौन से जो ऑक्साइड. Likewise, this one ferrite and oxide stabilizes. Now, अभी स्कैफोल्ड डायग्राम. जो स्कैफोल्ड था वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे पॉली स्कैफोल्ड करके एक मेथोलॉजिस्ट था. So what he did, he just made this diagram. ये डायग्राम इसलिए कैसे बनाएंगे? इसी के निकल इक्विवेलेंट, इसमें निकल का होगा plus 30 times of carbon plus 0.5 times of manganese. Now you notice there is no nitrogen. क्योंकि कुछ जमाने में नाइट्रोजन को मेजर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थे. Like chromium equivalent with chrome, moly, silicon 1.5, where molybdenum और niobium 0.5. These other benefits were considered. So what we did, we just checked different composition. Understand? जैसे कि 4% nickel, 4% chromium, 12, 8, जैसे करके इसके equivalents से इनका composition उसका phase check किए. And he just checked the various microstructure and phases
he finally concluded जो ऑस्ट्रेट जो वो इस रीजन में ऑस्ट्रेट में मार्टेजाइट ये रीजन में मार्टेजाइट इधर है फेराइट जो है वो जैसे कि हम ये एमसीज को बढ़ते जाते हैं 0, 5, 10, 20, 40, 80 फेराइट is increasing when you have here 100% ferrite. So what use of this diagram? So when you have a difficult composition, something carbon nickel problem, when you check problem equivalent to nickel equivalent, you can know where my structure is. And again, in austenitic stainless steel, you know, जब आपका वेल्ड रेट का ऑपरेशन में कितना डेल्टा फेराइट मिलेगा, if you want to check it before actual welding, this diagram can be useful. Okay, just assume some chemical conversion, but you just take the DC as a certificate of very consumable, and you see where my ferrite is. अगर मेरा ferrite 5 और 10 के बीच में रहा, then I have no issue that stainless steel can be welded without backing. When my backend composition is fine, and 10% ferrite. Well, somewhere here, right? So this is the use of this diagram. So next diagram is the below diagram. So what below mean? Actually, scapula give percentage ferrite, but below give ferrite number. This ferrite number is more. You can see ferrite number is more a convenient way to express the percentage ferrite. So we just give 2, 4, 5, 6. Then also percentage ferrite. You can see there is a deviation. 2, 4 के बाद में 6 के बाद 7.6 के बाद 8 पे थोड़ा डेविएशन आ रहा है. So percentage ferrite and percentage ferrite number में. Because what happened with sometimes some people were using percentage ferrite measurement. But some people were using ferrite numbers. So there was a big dispute between the parties. So what happened to minimize disputes over a period of time? What happened? Basic Research Council WRC has prepared a diagram. उसने उसका आगे रिसर्च किया. इस पे ग्रुप इवन पॉटेकी और स्टीवर्ट they contributed and they just developed this diagram. You can hear nitrogen. Now the nitrogen role is 20 times of nitrogen. You can understand. Oxide was developed के लिए nitrogen का coefficient कितना है? 20. Which means it is very stronger other than wind. So some gentlemen is question what is the U? And question what is the role of nitrogen? This is the role of nitrogen. Nitrogen's coefficient 20. You can understand even 0.08, 0.14 into multiplied 20 nitrogen is taken to oxide stage. Very significant value, very high oxide forming power, right? So this is the role of nitrogen. So and equal plus 35. Again, next role is carbon. You can understand carbon has a big role. Carbon has a big role. So that is why when you are welding carbon strip with stainless steel, you cannot use a carbon strip filler better. E7018, whatever, E7, S6, whatever, because carbon can destroy your welding chemistry. Positive stainless steel chemistry को destroy कर देगा. तो कार्बन इसमें 35% इसका weightage है. Carbon weightage is 35% है. You can understand this is more fatal, right? So now there is another important thing you can see here: A, AS, SA, and K. What is this thing? These are the boundaries. This welding research council has given something more. So what is first? He have different boundary. What the boundary says, if your composition is in this region, the certification code is in obstinate. If your welded composition in this region, your certification code will be the primary obstinate, secondary ferrite. It means our weld starts with obstinate, but at the end of certification you have some ferrite. बाद का आपकी लास्ट में ferrite मिलेगा. When your weld is in this region, your primary mode is ferrite and your secondary mode is obstinate. ये ferrite से start होगा और बाद का आपको
postulated burning. This is the most preferred board, FA board. And finally, F board. F board is our duplex stainless steel board. We start with the ferrite and finally enters for certification by 65% is posted. Right? So, welding system still has given, and this is the latest idea. WSC 1990 is the welding board. आप जो ऐसे भी सेक्शन है डिवीजन 1 है डिवीजन 2 है फिर whatever code uses in ISO code है Saudi Arab code है whatever code welding code uses welding research council the internet program is the latest is the final right because it is different than other two Scapular Relook and WSC 1992 right so any question. Now I will is correctly comes to the upgraded कुछ क्या फर्क पड़ेगा डाइवर्शन ज़्यादा आएगा तो क्या I will can't say as in a positivity or duplex stainless steel. in what Oh, okay. See, important question when the nitrogen is less, what is going to happen? In nitrogen is more, what is going to happen? See, nitrogen is controlled on 0.14 to 0.2. 0.143.2 in duplex stainless steel. I will It is 2205, yes. 22.5% technical. So in base metal, you have 0.14 to 0.2 max. And it's like, when you have in this range of nitrogen, you have very favorable welding situation in which your obstinate phase will be around 65 and 35 will be around ferrite. But provided some people are also using whether you are using a case-based process, जैसे कि आप SMW यूज नहीं करते, if you are using a shifted metal, this is gas textile arc welding, gas metal arc welding, what will do argon 98 2% nitrogen. So 98 2 combination, 98 2 combination will be better because some gas also coming from shielding also coming from nitrogen. You have also base metal with nitrogen. Again, consumable. Consumable also actually nickel. क्योंकि nickel भी ऑक्साइड स्टेबिलाइजर है, so the consumable में 9% in nickel होगा, instead of 5% 2205 नहीं होगा, 2209 होगा. So weldability will be good. Welding proportion will be fair. Now another question: what if it's less? If it is less, you have difficulty in welding. It means you have more ferrite, less phosphorite. We need duplex stainless steel. I'm talking first about duplex stainless steel. If you have more nitrogen, what happens? Nitrogen can combine with chromium. It will from chromium nitrides, sigma phase. You have corrosion ending. Chromium nitride is again a fatal. It is intermetallic. Chromium nitride is intermetallic. So again you have a corrosion issue with the welded duplex stainless steel joints. Right? So the better is ferrite. Better is nitrogen can control between 1.14 to 0.2 with a duplex stainless steel. Like shielding back, yes. In shielding case also 2% in nitrogen is all favorable. So in 98 to combination is the best combination. When you are using a gas-based processes like GDW, GMW, 98. Argon 98 and 2% nitrogen. Nitrogen secondary gas. So with the 100% nitrogen can be used. I don't say, but see, if you want to boost obstinate formation, see, if you want a proper microstructure, just try 2% nitrogen as a secondary gas. If you see the microstructure result, your corrosion resistance result, like the output packing it up, हम लोग अभी इंटरेक्शन में तो कि वीडियो करते हैं उसके बाद जैसी पेंटिंग कैटेगरी में हाइड्रोजन प्रकार तो बेटर है आदमी का प्रॉपर वेरिफिकेशन देगा. हाँ शिपिंग भी कर रहा है. अच्छा पर्जिंग में हाँ वो टू बेस वो पे हुआ तो पर्जिंग पर्जिंग में आपका आर्गन यूज करो. पर्जिंग का आर्गन देखो नाइट्रोजन पे गेयर फायदे क्या है. जब नाइट्रोजन अगर आर्क के कांटेक्ट में आएंगे ना आर्क के कांटेक्ट में नाइट्रोजन
हाइड्रोजन किस लिए अच्छा है? हाइड्रोजन अगर शेडिंग के लिए और ऑस्टेनेट फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन इज गुड। पर अगर आप वो नाइट्रोजन आर के कॉन्टेक्ट पे आ गया तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2 और इसमें से नाइट्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा एक हो जाएगा नाइट्रोजन देन के नीचे कंपाउंड कार्बन क्रोमियम सॉरी तो क्रोमियम बैटरी से ही वो बनाते हैं इसलिए आपको अर्थिंग में आर्गन रखो और शेडिंग में you just getting it loading. Working to get result. But after say you particular, this a particular go see. Shading with a mixed factor more. Okay, it is very reports because I work with stainless steel. So I work with the GAW 7W in this combination. I got better results. The इसमें मैसेंजर भी से भी यूज किया था तो it was 09 like Yeah, they told it. So, actually, see, this can be done. Okay. So, now, again, it was was tight up. Thank you. He decided to. Yeah, but that. The question is, where is my composition? Say, austenitic alloys are in this region, then it is 5%, 8%, data ferrite. People stainless steel have a generally 40%, 80% ferrite. Then you have a austenite. If it is a pure austenite, then there is a 0% ferrite. Dangerous composition SS3 we should not have but you should have some ferrite available. क्यों होना चाहिए उसके भी बात है right? When you have metallurgy there is no austenite but only in this region and you have a ferrite last 100% ferrite. So this is a something of the zone different zones austenite ferrite metallurgite defects and all that. Okay, so now, what is the use of scaffold diagram? How to use the scaffold diagram? It is more important. See, you want to join two base bender. आपको दो base bender join करना है. One is A508, right? Another is type 304L stainless steel. So this one is stainless steel. This one is carbon steel. Now you want to use carbon steel and stainless steel using a consumable 309N. You are using this, right? For distributor battery thread. Now, how you should use this? For example, if you use a 309L or if you use 3K, what will happen? Right? So, just focus on this. First, we'll try to understand what will happen. Say, matter A508, when you equivalent, chromium equivalent, nickel equivalent, it will fall in this zone. So it will point will come somewhere around this. If you calculate chemical composition of 304L, chromium equivalent, the point will come over here. Now we join two axes. These 2 points, 1 and 2. Now you consider that you have equal contribution, 50-50, coming from both the base metal. Like A508 will also contributing and 304L will percent contribute. So you take a midpoint here. And take a midpoint over here. Now what will happen if you join using a 309 consumable? Just check the chemical composition. Problem is equivalent of 309. It will come here. Now we join at the mid. अब उसके साथ mid के साथ आप connect कर दो. Now what will happen? Dilution. हमारे शुरू में देखा था dilution. Dilution, for example, if you consider say 20% dilution, it means from here, just you just divide this into 100. 30% means 30 likewise. So you just get 30 from somewhere here. Somewhere here you check the composition, it will have around 8% ferrite. So it's the same chemical composition. It means when you join
8508, it's 8 pack 304L, and with type 309 and consumable, right? So there will not be issue of weight cracking. Weight cracking की कोई issue नहीं रहेगी यहाँ, right? और उसको आगे भी समझते हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग देखिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन उसमें डिटेलिंग ज्यादा है, मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सीखते आप समझते हैं, आपको बटर टेसी आपको दोनों बेस मेटल के 304L एंड 508 के दोनों को कनेक्ट कर देना है, उसका मिड पॉइंट लेना है, बिकॉज यू वांट टू you have assumed that 50% coming that from this carbon steel, 50% coming from the stainless steel. Now you decide a midpoint. Now you check the DC of the consumable and you calculate the problem equivalent, equal equivalent. It will come here, right? Now you connect this load, connect the point with this midpoint. Now from here you need to calculate the dilution. You have to dilution connect करना है कि मेरा dilution कितना होगा। देखो ये पूरा को हम प्लेट में डिवाइड करें, ठीक है, तो 30 अगर 30% dilution होगा आपका 70% consumable chemistry, so it will go somewhere over here like this, so you have a safe composition. But what if you use a type 3 stainless steel? Type 3 stainless steel A508. Now you see the different case. You want to join, A508 with the 310. What will happen? Or where the type 310 is there, type 310 is in fully oscillating mode, where there is 0 Farad. उसके ऊपर सब कुछ 0 होता है. So 310 में crack होगा हुआ. 310 is susceptible crack, welding crack. There will be definitely crack. Right? 310 definitely there will be crack. So I will take many example of like this. So see, this is the WRC technical diagram. You know it. There is a solidification mode A, oxidative mode, oxidative ferritic mode, ferritic oxidative mode, and finally ferrite mode. Right? Okay? Now, this how you can measure the ferrite. First, ferrite measure करना कैसे करके कर सकते हैं? पहले the volume percentage ferrite. ASTM E562. ASTM E562 से volume fraction measurement technique. इस मेथड से कर सकते हैं. Is an expensive, tedious, inaccurate, and destructive because you need to cut the microstructure of welding metal. Just give to lab people will develop the microstructure and they will quantify the ferrite will oscillate. Ferrite quantification. If there are negative instruments like ferritoscope, you might be using ferritscope. Ferritscope instrument by Fisher, German back instrument, just pen-like instrument, just you calibrating with AWS 2.4, AWS 4.0, sorry. And you just check the ferrite number using the magnetic instruments because ferrite is a ferromagnetic. Magnet से वो attract हो जाएगा ferrite आपका, and it in a display ferrite number. So 3, 8, so and there were the magnetic gauge, 7 gauge, spectroscope is enhanced, calibrated using AWS 4.2. I just mentioned. And the values of ferrite in the ferrite number not in value percentage. So you get a more accurate number, ferrite number using this technique, right? So ये ferrite measurement की technique सर अगर जैसे कि मैं बोला कि ASTM E562 तो क्या करेंगे कि microstructure develop करेंगे. Microstructure develop करने के बाद वो उसके ऊपर एक forward next magnification की उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर रन करेंगे. सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे जैसे कि ये येलो डॉट्स है ना, दिस आर व्हाट स्पॉट्स जहाँ पर फेराइट है, वो फेराइट का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करेंगे एंड यू हैव सम फेराइट परसेंटेज 40, 30 all that. So this can be done with software image analysis, back switch calculation. How ferrite can be measured in a say chemically क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल
ferret standard is AWS grades and production grades. For example, the consumer manufacturer side. Consumer may opt will tell you, heavily take you a base grade, another grade, उसमें weight का deposition करेंगे, and they just check on the top. They just deposit the weight paid, and this technique is with the AWS ASME part room C, right? So they will use this type of electrode, welding current, width and length, the bitumen and width and length of the weld deposition, weld paid, and on the top they will check the chemistry and the ferret. This is a AWS grade method. What's the difference with the production welds? How production welds differ? I told you the production weld is not same as this one because dilution. Because of the dilution, your ferrite will be buried. It will not exactly say 4% ferrite, 6% ferrite. Now the ferrite will be buried widely because of the dilution. Dilution के कारण आपका ferrite buried होगा और थोड़ा अलग अलग जाएगा, right? तो ये instruments आपका ferroscope instruments is working on the magnetic inductive method, and you can see this. There is a calibration probe. Where you just you just calibrate it and just take the composition of the weld joint of the non-destructive method, because he not cut the section. Even if when the vessel is there, weld joint is there, we just take this instrument there and check. So this is a very portable instrument, spectroscope. Yes, and accuracy is 100%. Accuracy is called German issue is a 90% accurate. Spectroscope. It's height of 5 to 6 lakh. 5-6 lakh का ही है, but हर एक laboratory को I think the status fabricators they must have this right flexoscope instrument. Flexoscope instrument लेना चाहिए और Fisher is a brand. Fisher जो German make है, and ये instrument आपका production welds जो बनाते हैं, fabric बनाते हैं, इसमें आपके जो client के specification को आपको WPS आपको जो MQFP qualification करने में आपको ferrite का measurement होगा. फिर आपके पास JSSE का वेट कर रहा है तो आपको ASTM 242 IGC टेस्ट भी कराना पड़ेगा. IGC अटैक हुआ कि नहीं हुआ है, and so these are the PQR requirement, right? The requirement here. So this period. Next, so regulating ferret number against certification code. So how I'm going to say, for example, your base end of composition line somewhere here, and your filler end of composition line somewhere here. So you need to find a proper and consumable that will give you around a proper ferret number. So how to carry out this exercise? Ferret number, how it is calculated automatically. So we have 1 hour time exactly. So within an hour we will complete it. See how ferrets will be calculated. So these are the calculation. These calculations are not nowadays required, but this mathematical calculation, but this for our understanding, I'm showing it to you because we have now ferret instruments available, and we have calculated sheets also there. Excel sheets, Excel programs are available in the market. So what happens? Assuming this is a 304 fillet weld, and you have made a 308 consumable. Now this is our fillet joint, right? This is fillet joint. Now this is a dilution. A and B is the penetration. Okay, this is a concave bead. Here, same situation. You have less penetration. You have more convex bead. So you have convex bead. You have concave bead. Now you see the calculation differences. What I must do it? In the figure 1, how dilution is calculated? Base metal area divided by the weld metal bracket area. So A plus B divided by A plus B plus C. Now
you just calculate the area 0.25 0.25 and finally 0.25 plus 0.25 plus 0.5 units square, right? So it's around 50%. Here you have a 50% high dilution because you have use of techniques or the welder has deposited a quantity of heat and more penetration. You can understand the more contribution is coming from the base metal. बेस मेटल से ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, मटेरियल आ रहा है, इसलिए क्या होगा आपका जो बेस मेटल का कंपोजिशन है इसमें डायल्यूशन ज्यादा हो रहा है. So because of the dilution, your ferrite number is somewhere around here. The ferrite number is calculated. Ferrite number in high dilution, 50% dilution of the ferrite number takes height. You consider this case where you have a convex speed, right? But you have a less penetration or medium penetration. So what will happen here is there is a more contribution from the filler metal. So almost here dilution is 20% in between, and here is a 50%. So what is with the now you just take this point. What makes you should point? Red, green. Just take the red and green. To make absent. Red and green. High dilution is up red. Low dilution is 20% का. This is 20%. So you have a red and the red comes here somewhere around. You have 2 to 4. You have it approximately 4% ferrite, and you have a green. Less dilution, you have more than 6, between 6 to 8. So 6 to 8 is more favorable. It's a more favorable backing structure, 6 to 8. Because you have a low dilution. When you have a low dilution, you just take point here. Ferrite number is calculated is minimum 7. Here ferrite number calculated minimum 3 here. So when the ferrite number is less, there is every possibility of weld solidification taking. So solidification can happen when there is a less ferrite number. We will also discuss subsequently what is the role of ferrite, how ferrite can save metal from cracking. That also discuss. Now this is how it is calculated. Check. You can see this is 304 is the material. Base metal 308 is the consumable. You can see proper equivalent, equal equivalent. Here comes your A is your base metal. Or where the brown color is your consumable. Right? Like have someone. You look like this sound, let's get a bag. Green color. Green color is your consumable. Right? So you calculate the proper equivalent for 304, 308, equal equivalent for 304, 308, and you finally have this. Now you consider a multi-pass process. Now previously, in this diagram, there is only a fitted weld or with a single pass. Right? Consider a what weld, it's a multi-pass. What will happen? When you have multi-pass, so the multi-pass का मतलब क्या होगा? Say, you need to calculate dilution of each pass. Pass number 1, pass number 2, pass number 3, pass number 4. So this is a good pass. This is a hot pass. This is a chem pass. Right? So you just check the contribution. When it is a root pass, when it is a root pass, 20% coming from the base metal, it's a big percentage, right? Because previously we defined that 40% comes from the 30 to 40% comes from the base metal, and rest 70% comes from the filler metal. Filler metal कितना होगा? 30 से 40% होगा. अदरा आएगा 20 आएगा. तो इसमें बहुत सिनेरियो कंसीडर करके 20 समय दिया है, ठीक है? In a root pass, there is user root pass. Now what happens in a pass number 2 and pass number 3? In a pass number 2 and pass number 3, 50% comes from the 304L and 50% because this pass is towards the 304L. एक उसकी तरफ है, तो ये तरफ है, ये 508 की तरफ है,
तीसरा पास, तो उसमें से 15 सीधे जाएंगे, ठीक है ना? ओके नाउ सो उसमें जो टोटल कितना रहेगा, 5 वर्ष का 15 रहेगा, उसमें 5 का भी 10, बाकी का बैलेंस वो 5 का 15, 5 का कैसे 15, 5 to 15%. Here it goes 15%. Now pass 4 is a direction of 2 and 3. 2 और 3 के ऊपर आ रहा है, इसे फिनिश पास के पास. ये 2 और 3 how is numbers using 5%, 5%, right? And 5% इसमें सारे टोटल पास 2 और 3 और 15 था. Now you calculate this. अभी कैलकुलेट करेंगे, आप दूसरा टेक्निकल कॉम्पोजिट करेंगे. फॉर एग्जांपल E04 फिलर पैनल, sorry, base metal, A57 base metal, and G08 filler metal. What will happen? The weld metal chemistry will be somewhere around when we just put in a WRC 1990 diagram, welding business concept 1990 diagram, when we just calculate it to manually. Contact with us is ratio techniques and okay, and again this like which is like hard. Now you just understand the color code: red, blue, green, and purple. Weld cuts here red, blue, green. Yeah, red, blue, green, and purple. Back in your will. So it is diagram, right? Sorry. So red is a composition of pass 1. Pass like this. Still nothing with the big pass. Big pass. Where fusion only. Not pass. Fusion. The pass 2 and pass 3, you have more dilution of A04 in pass 2 and more dilution of A57 in pass 3. Right? The just check with this, and is a pass 1 of unity. Second key, you will say a pass 3. Purple is you was like pass so and please what pass it play. So you can understand the in the mathematical calculation that is percentage. This one was clear that additional 20% remaining 60%, 40-60 here, 20-20, 40-60 here, 15-17 rest 70.7. So likewise when you mathematically calculate what you can come around this one, so you can understand the result when you deposit by the path. So a good pass will crack. Why pass will crack? Because it is polymetal A region, purely oscillating. It's not a root cracking possible. Secondly, it may be possible, but between AS, it's possible. Past AS, in this FA result, SPA, on border of FA results, there cannot be good pass. So they can good pass crack hoga, what pass they will feel on crack people. Because this is a metallurgical analysis. This is a more metallurgical analysis says so, right? पूरा metallurgical analysis paper ही डिपेंड है हमारा. Picture, we can take the picture, question, correct number. ये तो next example. So you can understand the importance of dilution. Sorry, dilution is very important and very playing a crucial role, because dilution will depend on what your consumable. Your welding process, shielding case, then your welding technique, right? And dilution, heat input, characteristics, working MPLH, your traveling speed, because if you have less traveling speed, more dilution. If you have faster traveling speed, less dilution. So traveling speed also better. So there are many parameters you decide about values. सिलिकॉन रेट था, वो स्वीट रहता है. सिलिकॉन क्या करेगा? ये आप सिलिकॉन से क्या रेडी बढ़ती है.
Exactly. जब आपके आगे sequence and full penetration बना रहा है, very well. When you have not access on the other side, then you for welding the single side full penetration is 308 KLSI. KLSI वाला वायर यूज करेंगे तो क्या होगा आपका सिलिकॉन जो है ना वो क्या करेगा ये बेड के को थोड़ा टॉप बेसिस बना मतलब इसमें फ्लूइडिटी बनाता है उसके ज़्यादा बनाता है ज़्यादा फ्लो करेगा मटेरियल आपको रूट तक आपको पेनिट्रेशन मिल जाएगा वेरी यूजिंग 308 KLSI. फिर आपको अगर बॉडी बिल्डअप वाला कंज्यूमर यूज करना है जिसमें बहुत एप्लीकेशन ज़्यादा है तो 308 LMO आपको LMO यूज करना पड़ेगा. सो दैट्स नॉट डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन राइट इस यूज करना है तो कैसे करके हमारे कैलकुलेट होते हैं राइट नाउ we just go to our next certification mode is more important than residual ceramic temperature. You know, some people say that 328 Fahrenheit number is good, but no, it's not a magic number. 328 is not such a magic number that when you have a 328 Fahrenheit, you are safe. Your weight penalty is without break. No, it is a certification board. सर्टिफिकेशन बोर्ड ऐसा आपको मिलता है इसलिए आप इसमें करेक्ट नहीं होता हम जस्ट सी दिस उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. आई जस्ट मेंशन व्हाट इज ए बॉन्ड ए स्पॉट एफ बॉन्ड एंड ए स्पॉट राइट. जस्ट सी व्हेन योर कॉर्पोरेशन इज पुलिंग फ्रॉम दिस बोर्ड प्योरली ऑफसेटिंग बोर्ड व्हेन योर कॉर्पोरेशन इज AF बोर्ड ऑफसेट प्लस फेरेट कॉर्पोरेशन इज फ्रॉम प्राइमरी ऑफसेट secondary ferrite HF board when your composition is primarily gas board. So your board of certification is important. Here you can see in a fully offsetting board you only this is a liquid. Now liquid is converting into solid. अब liquid में से solid बन रहा है ठीक है ना तो क्या हो रहा है आपका ये offset only offset is working. It's only offset. Now what is happen? Offset तो बन रहा है but बीच में देखा ये अंतर between the you know defects ferrite भी बन रहा है प्राइमरी ऑक्साइड बन रहा है पीछे ferrite बन इसमें क्या बन रहा है FF board में there is a primary ferrite and secondary oxide at the end of solidification and F board पहले लिक्विड में से ferrite बाद में ferrite का कॉलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑक्साइड इधर में defects है. Defects is certified in F board only. So you can understand the board of certification is very important. So when you have a FF board, where an offset certification board, you have no risk of cracking. आपका stainless steel में crack नहीं होगा. Your stainless steel without any cracking. Right? So you can take the picture, shape. Okay, so some kind of adjust. So microstructure you can see, and this is a pure offsetting board. Pure offsetting board, you can say is that you have a cracking issues. Here it is not showing me any crack, but in a later stage I will show this is just a S-bend microstructure, but pure offsetting board we always have a cracking issues. Then next is your FA board. Plus, there are parts underneath this weight region where primary ferrite, secondary oxide, primary oxide, secondary ferrite. What we have here is here you have no crack but here there will be chances of cracking. Often take a spot. Third, if a more difficult, there are certainly ferrite oxide come out with the finally you will then go through one. You can say this is a ferrite oxide important for you when stainless steel. Well, just like with duplex stainless steel. Your duplex stainless steel is how it is. We said ferrite and oxide. You know that is light with it. Ferrite, oxide. Come on, ferrite and oxide. The phase microstructure of your duplex stainless steel. Correct. So. Okay, you can see this ferrite and oxide just I'm coming to all further. For example, this you can say this in a AF board there is a cracking issues. AF board because primary oxide is still connected, but the FF board there is no cracking. The yes, that's all. Certification cracking AF board
vision of single 6N weld. Set. Okay. Because what happens when there are elements like sulfur and phosphorus, तो sulfur and phosphorus क्या है वेट मेटल के लिए अच्छे भी है, अगर वो बेस मेटल में है तो भी अच्छे नहीं है. सल्फर और फॉस्फोरस क्या है वो लास्ट एज ऑफ सर्टिफिकेशन में यहाँ सेग्रीगेशन हो जाएंगे. They will get segregated here. And what happened? It will create this point with the base. During wet cooling, very well, this will wet that boundary. That boundary जो है एक पूरी लिक्विड रहेगी. बाकी का तो सारा सर्टिफिकेशन हो चुका है. Matrix is certified, but your dead boundary is being wetted. वो लिक्विड सेट है. तो कि सल्फर और फॉस्फोरस जो है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका सर्टिफिकेशन नहीं होता. उसका तो 200-300 के बाद होता है. वो तब तक तो बाकी का सारा फ्रीज हो गया है. And this is without freezing. So this boundary cannot withstand the body stress. इसके कारण this bonding goes up and if you have cracking issues. So here you have cracks, right? So these are result of cracks. So you must see that sulfur and phosphorus should not be there in composition. Problematic phases, phosphorus and sulfur. And some other elements like diamond and TPT man deliberately added. Okay, now this is a weld center like cracking. Other than you can see center that is big crack, weld center like cracking. Sorry. Next, next, see, this is a conclusion of this WRC 1900 diagram. When you have a positive pore solidification, you have a high cracking susceptibility. अब cracking सबसे ज़्यादा होगा. But when you have a AF mode, the susceptibility drops to very low. And when you have a FM mode or PS mode, particularly the austenitic stainless steel, when you have F mode, generally when you have a Fahrenheit number around 5 to 8, you have this situation. You have a very low cracking susceptibility. You have no risk of cracking. And further, you have F mode of certification, again, down slightly sticks, but not that difficult. So the preferred mode is FM mode. What is that? Because they want very low, you can see this cracking susceptibility. So अगर आपका FM mode में कब होगा? When your weld battery is going to solidify FM mode, when you have a data fair जब आपका 5 से 10 के बीच में होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है. अभी एक केस मेरे पास आया था अच्छा इसमें क्या था देखो इसका ऐसा ना एक मैन्युफैक्चरर था जो फैब्रिकेटर था उसको ASI 1 इंच स्टील के साथ SS316L का जॉइंट बना रहा था. तो इसके उसने कंज्यूमेबल यूज किया था ER309L. तो व्हाट हैपेंड उसको क्रैक आ रहा था बार क्रैक आ रहा था. He was facing cracking issues. So I asked him to please give me your MSS. आपके जो केमिकल कॉर्पोरेशन को चेक करने के बोले उसका मेटलर्जी एनालिसिस का होगा ये डायग्राम के ऊपर and I'll give some his suggestion what can be done. So he gave me this DC. उसमें केमिकल कॉर्पोरेशन के ट्रेस आ रहे और बेस मेटल के और कंज्यूमेबल में. Now when we check this chemical composition of film metal ER309L which are ASME section 2 part C specification. I know everything was okay, but there was no nitrogen. In ASME section 2 part C, there was absence of nitrogen. So the people gave me this chemical composition and it told me this is my chemical composition and I'm facing severe welding issues. Right now, what I did mathematical analysis in the WRC 1919 diagram. I checked what went wrong, what happened. So when I checked with that WRC 1980 diagram, this is where I calculated problem equivalent, nickel equivalent. The base metal one kept somewhere here. This is the base metal one. Base metal one. This is 3. This is base metal 2. But now I have considered 50-50 contribution. 50% from base metal 1, 50% from base metal 2. So I took the midpoint and I just
put the technical composition of the filler meter, item filler meter. The SIT section के part से technical composition. Now you can see this, everything is out of the boundary, right? So A bond, that's a good, fully concentric A bond. So what happened? Actually, or this thing was presence of nitrogen, 0.132. So one gentleman asked, what is the role of nitrogen? So nitrogen can be a bad when it comes to a mosaic statistic. Because of nitrogen 0.132 with an obstetric very better, you could see the whole picture as jet. पूरा सीन बदल गया है ना WRC 95 की जब उसका एनालिसिस किया कोई तो वेल्ड सर्टिफिकेशन कोड है showing under A bond fully offsetting bond and if you have deep ferrite you have no ferrite and when you have no ferrite there is every possibility of cracking तो तेरे की होना ही है आपका ठीक है तो ferrite जो है उसका बहुत है ऑप्टिक स्टेबिलिटी की रेट बेटर so you can understand this ideally क्या होना चाहिए कि आपको वेट पेंट में 3-8% around 6 to 8 up there the ferrite should be available. That is the ideal situation. Now, okay, now I'm coming to the main topic discussion that somebody asked my agency to think of something anyway. Now, for sure, and I think the fabricator has to, have a proper check with the with the 11 port and before actual welding, we should also check the theoretical proportion. Otherwise, you would end up with a big problem, issue. So that is was the advice was made to it. Anyway, but you could understand the role of nitrogen, role of uninvited nitrogen. We should say the nitrogen was not expected, but it was uninvited. So uninvited nitrogen, उसने करेक्ट करा दिया कि वो आना नहीं चाहिए कि वो केस देखा क्या था हमने शुरू में बोला था नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग फॉस्फेट फॉर्म पर है लाइक कार्बन आपने देखा WS 90 में उसका कोएफिशिएंट कितना है 20 टाइम्स कार्बन का 35 टाइम्स इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन चेंज द पिक्चर लाइक एनर्जी पूरा आप सीट बदल सकता है और आपका वेरी मेटेरियल पूरा डिस्टर्ब कर सकता है दैट इज व्हाई देयर इज अ critically about the cleanliness of the base metal, chemistry of the consumable, then the shedding gas, right? Because CO2 of the stainless steel में जब stainless steel का वेल्ड बना है तो CO2 कितना भी यूज करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आर्गन का यूज करता है ये कार्बन जो है कार्बन तो वेल्ड पे क्या हो जाएगा कार्बन वेल्ड पे डिफ्यूज हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देगा so CO2 can never be used. Right? Carbon dilution and correct CO2 is not a recommended gas. That's the argon. Because argon is actually active, right? It's passive, right? It's inert. So it's not going to interact with the event. So sheeting gas operation also happens, and that's another case. Now another case belongs to a 34 pH precipitation grade, underground grade. And SS304L, austatic stainless steel. Now, the inquirer or the fabricator was a dilemma. This is a case study too. It was of the dilemma because, for joining the 74 pH precipitation underground grade steel, the recommended consumable is ER60. But what is a precipitation grade? Other is a normal grade without a precipitation 304L. So, he should use ER630 or ER304L. So it was a dilemma situation. क्या is so again role of metallurgy analysis comes to picture. In fact, तो metallurgy का role क्या रहता है तो इसको analysis करना पड़ता है. Using a type of diagram, he has to put the things into diagram, work out, and coming to some justification. Some metallurgy justification. This is right. This is wrong. Right? So this is the responsibility of our academic people. And you academic people come, you industry people come to academic institutions where some people are there because
I don't say that you don't have the knowledge because you I can't have. आपके पास क्या है कि आपके पास के प्रोडक्शन का प्रेशर है, आपने जो प्रोडक्शन देखा है, you people have to focus on your production. But जो R&D है, जो एनालिसिस है, वो सारा रोल किसका रहता है? That roles belongs to academic institutions. So just people approach academic institutions that there is something wrong with our reliability, there is something wrong with our welding joints. Please solve this issue for us. Now then our upstream. Okay. So anyway, so another yesterday was between this 34 PH and SS304. Again, the chemical composition were tabulated, and it was the required was in a dilemma. You should use 3010 or ER630. Because ER630 is a recommended consumable for 74 pH. Or you should use ER330. Abhi naturally ER310 is a low cost consumable. So it's definitely attempting, it's a temptation, human temptation. Why not use it 3010? Why go for a positive filler better? But what the metallurgical analysis says, you see when you are using I'll just copy this diagram later. Just when you calculate problem equivalent and put the values of this diagram, when you work out, see here your at the 74 pH operation comes, here your 304 comes. Now you connect these two dots, and if you use EL630, right, we just assume that 50% variation comes, 50% comes from base metal A, base metal B, and you connect this EL630 with the midpoint, right? And you consider only a 20%, I think 40% dilution. 40% dilution from your weight and proportion will somewhere no parameters, right? So your weight metal will have a generally ferrite will be 20 to 90. A case for polo, so it is primary ferrite, secondary was ferrite. Now, but you see this shaded gray difference, shaded gray. Now this is the biodensity boundary. Biodensity brown boundary. Don't shift. This boundary was not available in Kepler or Dillon diagram. But the work by Dr. Koteki, Dr. Seward, they developed this diagram and they show that whenever your weld metal composition is either on or under this boundary, you may have a martensite formation in the heat effect zone. आपके हेज एरिया में मार्टेनसाइट बन जाएगा, पॉसिबिलिटी है बन जाएगा, उससे कारण आपका क्रैकिंग इश्यूज आ सकते हैं. सो दे हैव given this diagram 1% martin strip of diagram, right? So here it is exactly on this point. क्योंकि वेल्ड मेटल कॉर्पोरेशन ऐसा बन जाता है जिसका आपका एयर हार्डनिंग इंस्टीट्यूट कैसे हो कि जैसे कि कॉर्पोरेशनिंग खुद इतना हार्ड हो जाए कि सर्टिफिकेशन के टाइम पे वो क्रैक हो जाए. This air hardening works, right? Now another, when you use ER630, there will be 30% less dilution. Again, your composition push into this gray field. Again, you have a hacking issue. Now, if you use a 40% dilution, again you have a under this. Now, what will happen if you use a 308L? So, base metal 1, base metal 2, 50% contribution, you correct it, the weld metal composition is very safe. Which far away from this one, martensite boundary, and you have delta ferrite 10 to 20. So, what I said that before actual welding, what should work out? This kind of analysis, because when you do practical, you can also do practical, like just video play or just make his own butt weld or fillet weld or whatever. You can do it practically, but you will be wasting your time, your welding consumable, your material, and it's a kind of R&D thing, right?
So I wanted, why not give this kind of program to us? Why don't you write to us? Like you want to weld like this, and we can, we can get back to you within a 3-4 days. 2 working days are there. Then this could be your problem. You don't go for this. You did this way. You take back. So, right. So this is our second. Now, what is the goal of ferrite? There are many hypotheses where you propose about the role of ferrite. बहुत सारी आइडिया आती है. अगर ferrite का है, कि क्या रोल, उसका क्या रोल प्ले क्या है ferrite का? तो एक तो ferrite का रोल है क्या है कि जो phosphorus जो सल्फर है, जो सारी impurity है, जो low density material है, तो के लिए वो क्या करता है? वो उसका डायरेक्शन उस पर ज्यादा है, तो सबको वो निगल लेता है, सबको क्या कर लेता है? सबको खा जाता है phosphorus सल्फर को. इसीलिए phosphorus सल्फर है वो ferrite में ज्यादा soluble हो जाता है, और वो जब soluble हो जाता है तो वो प्रोग्रेस नहीं रहता है. दूसरा एक ऐसा कहता था कि ferrite और ऑक्सीडेंट की जो बाउंड्री बनती है, ठीक है ना, वो थोड़ी 6 बाउंड्री बनती है. 6 ऐसी बाउंड्री पे क्रैक आता नहीं है. जैसा ऑक्सीडेंट की बाउंड्री है प्योर ऑक्सीडेंट की सर्टिफिकेट कॉल्ड, और इसमें क्रैक इजीली प्रोपोगेट हो जाएगा. उसमें 6 आता है. That is the second hypothesis. So, this is about the grade boundary. So, in third hypothesis that filler metal design, क्या है कि जो filler metal manufacturers है, वो ऐसा डिजाइन करते हैं कि आपको जब वेज बनाते हैं, at the end of certification आपको ferrite कुछ बच जाता है इसके अंदर. filler metal में ही आपका बिना वेल्ड मेटल का लेटेस्ट चाहिए, जिसपे आप 304L को ज्वाइन करने के लिए अगर आप 308 यूज करते हो, तो 308L का कंपोजिशन ऐसा डिजाइन होता है. एट द एंड ऑफ सर्टिफिकेशन यू हैव ए अवेलेबल ferrite. Now, so you can see these some features of some certificate tracking, and I will explain you. Now, has liquidation tracking. तो वेज लिक्विडेशन ट्रेकिंग के बारे में मैंने आपको शुरू में एक ग्रेड को बारे में बताया था, 321 347, जो टिटेनियम स्टेबिलाइज एंड हाईली स्टेबिलाइज, राइट. तो उसमें एक डिफिकल्टी है, देयर इज अ लिक्विडेशन ट्रेकिंग. सो लिक्विडेशन ट्रेकिंग बिकॉज ऑफ द वेटिंग ऑफ द डायनामिक कार्बाइड एंड बिकॉज ऑफ द टिटेनियम कार्बाइड. So has liquid tracking. Yeah. So you can see this left and right figure of stabilized grade when the metal has breaking. Like this. So because when this in a fully oscillating board, the stack is likely that when it's a primary ferrite or secondary oscillate, stack is less back. Both back. Now, well metal equation breaking by. Okay, so what should be your level of ferrite? You see, if you have mathematical composition of 308 here, 309, 347, you should have minimum this number of ferrite numbers. With the ferrite number, अगर हमें एक vector composition है, then you can have your weld basis of stacking. Now, and then so ferrite को हम ऐसा बोल सकते हैं double-edged sword. आपने जब बोल बेधारी तलवार, दो बेधारी तलवार उसकी एक नाम क्या है? स्टार अलग है. तो ferrite जो है ना, it's just like a double-edged sword. How double-edged sword? Because it is a good and bad effect. Both. Because see, the issue are your purpose is still enhance the weld metal in a ambient temperature. Normal chloride in this kind of temperature. 3 to 8% ferrite number is good. But is it known for curia application? High temperature application? No. Always remember, high temperature application, for example, we have seen that superostatic steel or that low I-69, these are the some welding concepts give you weld metal composition less than 0.5 ferrite number. 0.5 ferrite number. They strict control over the ferrite. और आप यूरिया एप्लीकेशन के लिए, वेल्डिंग के लिए, रिसीवेबल भी आपका अलग है.
2i69 to certificate the para stuff. उसका जो मटेरियल है DP30 वो भी अलग है. इसमें फेरेट लेवल है 0.5 है. क्यों? इसका आंसर है ये डायग्राम है. पास्ट में बहुत पहले डायग्राम रख दिया था. Actually, I was supposed yes this because whenever the ferrite is present, what happens at lower temperature, say ferrite somewhere between 800 degrees centigrade, right? So somewhere around 800 degrees Celsius, sorry, Fahrenheit, Celsius, what will happen? This will have two forms, sigma phase, then alpha prime phase. What happens when your weld metal is exposed to high temperature, say from urea application, urea carbamide solution synthesis and all this process, when your weld metal is exposed to high temperature, there will be a sigma phase production. And sigma phase is a embrittle phase, right? We just whenever it is present, जब वो microstrip present होगा, तो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे वो porosity करेगा, states को concentration करेगा, and your weld metal is tacky, right? And alpha prime, you can say the alpha prime range is from up to 90%. You can say up to 90% probably is there in alpha prime. Tacky CR. Alpha prime आपको जब आप chemical को कुछ check कराएंगे, the iron point is around 90%, and in the sigma phase it is around say 40 to 50%. तो 40 to 50% आपके sigma phase आएगा, iron chromium और अपना alpha prime आगे उससे check कराएंगे तो 90% आएगा. Now the question comes, जैसे आपका एक कार्बन स्टील का अपने इसका पर आपका कोलोसल रेजिस्टेंस ओवरले करना है, CRO करना है 316L का. Now the question is, बहुत सारे fabricators को क्वेरी होती है कि हमारे कोड में लिखा है कि कार्बन स्टील को आपको PWHT करना है because thickness 38 mm से ज़्यादा है. Now is it advisable to just PWHT? What will happen? What will happen? Because whenever you say in a 316L, you have 5 to 8% of your ferrite. Now this ferrite, when it's exposed to say 475, it takes a very long time. So it takes 100 for thousands of hours period alpha prime formation. So there is no issue. But when you want to say deposit on a carbon steel and say duplex stainless steel, the corrosion risk is overlay. You can see around 400, say around between 400 to 500, say technically precisely 485. To sigma phase formation is taking place. Sigma phase is a severely embryonic phase. तो आपका CRO टूट जाएगा, corrosion risk is overlay, उसमें टैकिंग हो जाएगा issues. इसीलिए PWHT जो है वो क्रिटिकली करना पड़ता है, राइट? इधर कार्बन स्टील के ऊपर आप बफर ले अप्लाई करो 308 का, फिर उसका PWHT कर दो, उसके बाद आप CRO अप्लाई करो, राइट? So there are many tactics people go say, but this is the metallurgy of the cigarette. That is why sigma phase, alpha prime, these are all embryonic based basis, and so that is why. When you are welding carbon steel with stainless steel or overlay of weld overlay, one has to be very, practical in some situation like when to go for EWHD, when to go from overlay and all this. Those type. Now next, I think the next phase of over this is like to understand the end of the okay. So we did 50 minutes will complete. Now about welding stainless steel. So important phenomena you need, we have the WPS mentioned interpass temperature. And your preheat is not required for your stainless steel, right? Preheat is not required. You can start with the mid temperature. But if for WPS you require 65 degrees Celsius preheat. Why? Why so? Because there is a problem like weld sensitization. When your weld is exposed, it is
IIT-52, 650. This comes down. Chromium from your grain migrate to grain boundary. Just like you see in this picture, or like this picture, right? Chromium from this grain come to, not the grain, but near the grain boundary. I really why not from the grain, but here from the near to grain boundary, chromium will participate with carbon and it from chromium carbide later on. This is a continuous standard. Right? You can see this is from the grain, not from the inside the grain, but near the grain boundary. Chromium stops and combined with carbon forms covalent carbides. Now this will work as a anode, this will work as a cathode. So you will develop a galvanic cell. So this kind of very better, sensitized steel, exposed to say chloride atmosphere, chlorine can be split to say, right? Corrosive atmosphere, you have a grain boundary corrosion. This is called IGC attack. It is very low corrosion attack. That is why you are in your PQR, you go for the STM A262. Very chloride test, right? IGC test. You have to qualify your material. You have to qualify your, PQR. So, because you need to check that your weld metal is not bound to IGC. You have not, you have used the right welding parameter and welding interpass temperature and heat input. So, you have your weld metal is without any atom of chromium carbide, Cr20C6. So, why you maintain the interpass temperature? Just look at this diagram. It's a very beautiful, explanation from the Shito Kao book, a very good metallurgical book. Right? You can see this is the one joint, right? You can see this. Just you look at this 1, 2, and 3. What happens? This is a thermal cycle. Your weld is heating and cooling. Heating and cooling. Now you deposit one pass. So one curve. You follow this one curve. Now there is a certain bed, 5 to 650, where you have every chance of chromium carbide precipitation. Now you don't go, you will get away from this bed. After 550 to 650, practically 500 to 800, 520 के बेड को आपको देगा 3 बने दे रहा है, जो हम get away. Yes, अगर sliding to get away, you can see this, you deposited one pass to your thermal cycle. Your weld is heating and cooling. Again, in the second pass, heating is cooling, but it is under this bed. How do you recommend? Because what do you recommend? Your weld metal slightly away from this in a haze area. There be chromium carbide precipitation. So chromium carbide precipitation protect this. Nothing will happen in the base metal, but in a network of chromium carbide is protect. So your material is sensitized. Sensitized is just like rebar or gap. It's just like this, just like an COVID infection, which is immediately over the so it's a COVID infection that they'll have. It's just like the immunity of the steel. So when the steel gets sensitized, right? So उसका immunity drop हो गया. And when some kind of steel is exposed to chloride atmosphere, the corrosive atmosphere, there will be a IGC attack. So how you can get away from this band? कैसे कर करेंगे? You maintain interpass temperature. What do you do? जब आप PQR क्वालिफाई करते हैं, फिर एक पास लगाते हो, फिर आप इंफ्रारेड ग्लव से देखते हो कि मेरा टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है. You want that your temperature drops below 200, 150. Then you go for the second pass. Second pass आप जाते हो 20 पास. कि आप ऐसा नहीं करते कि एक पास डिपोजिट किया, without stopping you deposit second pass. What do you do? Your first pass, again on the second pass. So somewhere this middle pass will be exposed to a temperature band of 500 to 800. तो वो सोल में चला जाएगा वो. आपको इस सोल में उसको नहीं खाने देना है. You want that the temperature drops to sufficient to say safe temperature. Then you go for the second pass. Then you go for the second pass. Why? Stainless steel is a heat resistance material. स्टेनलेस स्टील हीट को पकड़ के रखता है. वो कार्बन की तरह वो फेंक नहीं देता है. कार्बन स्टील जो है उसमें भी मेरे पास मैंने लगा पड़ता है क्रोम और स्टील का फैब्रिकेटर. तो कार्बन स्टेनलेस स्टील क्या है, हीट पकड़ के रखता है. वो हीट को ऐसा से छोड़ता नहीं, इसीलिए आपको उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना पड़ेगा. फिर हम आप सेकंड पास कर सकते हैं.
जो आपके आप सकते हो ये आप इसने आप हीटर पास टेम्परेचर मेंटेन करके ये आप समझिए कि लॉजिक ठीक है ये इसे और किसी को इंटरेस्ट है तो आप शिको का कोई आई कैन बी टेक्वा ठीक है अभी हम लोग सेंसिटाइज ग्रेड स्टील में है तो वाई भी यूज स्टेबिलाइज क्योंकि आपको मालूम है कि क्रोमियम जो है क्रोमियम अच्छा आई जस्ट टोल्ड यू कि वाई chromium is participating from the air from the grade boundary, not from the grade. क्योंकि जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके एटम स्मॉलर है, तो वो डिफ्यूजन इजीली हो सकता है. वो क्रोमियम का एटम बड़ा होता है, तो क्रोमियम एटम जो है वो ग्रेन में से भाग के यहाँ आने में टाइम लगता है. तब तक क्या होता है? तब तक जो ग्रेन बाउंड्री वाले हैं ना क्रोमियम, वो उसके साथ पार्टिसिपेट हो जाते हैं. You know, before interior chromium participate, this grade boundary, near to grade boundary chromium participate with carbon and from chromium carbides. So what happens? आज आपके chromium में वो 80% कम हो गया. You are now loss of chromium in the grade boundary, so you are exposed to the corrosion. Corrosion आपको protection नहीं रहा. So ये देखा है कि हमारे chromium किसी जो रैम है CN2 और 3 फील्ड वही उनको प्रोटेक्ट करता है पर इसमें ये प्रोटेक्शन नहीं रहेगा जो आता है ओपन एक्सपोज हो गया इसलिए आईजीसी अटैक हो गई राइट. सो दिस इज फंडामेंटल. ये देखो ये जो बेल्ट बनाया है ना इसको देखो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन मेक हियर कौन सा मिशन सेक्शन है इस आपको कौन सा देखिएगा लाइक दिस. सो इधर अटैक इट हैज एरिया इट्स स्टेनलेस स्टील. Now, okay, see, this is a very important this topic is something to go. Are you eating or you dying with that? देखो, जो faster rate से कार्बन के साथ जो क्रोमियम जुड़ जाता है ना उससे ज़्यादा faster rate से टाइटेनियम और डायटियम जुड़ जाते हैं. टाइटेनियम में डायटियम अपार्ट में कि उसका देखो ऊपर. So titanium and diatom can combine with carbon. It's with less than compared to chromium. Right? That is why it is stainless steel grade 3:1 V8 titanium V8 diatom. Right? So these are okay. Now see again why we should use low carbon steel because you can see this. You have a time versus temperature. Now your welding is quick. Right? When you use a 0.07, 0.8, your cooling will hit this curve. This factor. But when you have less carbon, you have more time available. You can say time is available is more. You know, so आपका cooling भी सही तरह के साथ होगा आपका फिर भी if your cooling is more than say on thick section. Right? In section, even in thin section, when it's rolling, you have more chances of chromium carbide. That is why we went with the low carbon, right? 0.03 L grade. Because you people work with the welding industry, you just use L grade. But why L grade? These are right? It's okay. So these are a picture of intercranial attack, diagram. Now, okay. What happens if your metal is sensitized? Sensitized हो गया तो क्या करना है? See, what remedy is solution quenching. We just heat your, you just what you just prepare weld. You just check with the laboratory, and laboratory people tell you that there is a chromium carbide deterrent. Now, what's the remedy? One of the remedies is you just heat the material, solution in the material to 1011 degrees Celsius and quench it. Then we quench it. When you quench it, now carbon has no time to combine with chromium. Has no time because naked quenching does not give any time. So, but there is a problem. It is people don't do this. Why? Distortion. Because distortion will take place. That is why more bias precision is used to stabilize grade 321, 347.
because heating and quenching is not that practical. It is good, but not in the practical way. You stabilize the grade when you go with your welding, right? 321, 347. When you have more IGC issues. Okay, now titanium of the alpha tissue pin chemistry to attach of the armor and all this. Space selection is key. There is another type of slows. Yeah, but that's what we do. Okay, I will sum up in 5 minutes because special answer. Because you have to beyond your capacity. Because a complex metallurgy. Metallurgy is a and I must appreciate your patience. Because even if we teach in a classroom, no students, no single students sit for 2 or 3 hours together. It's difficult to sit for 1 hour together because you have a genuine interest. Both interest is me, right? Okay, for sense selection training is just like मैं उसको थोड़ा भी सबक वर्किंग ज़्यादा नहीं करता। जनरली ये जो 321, 347 है, स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेस रिएक्शन की टेक्निक है, ये इश्यूज है। जैसे कि स्ट्रेस 50% सेपरेट कंडीशंस, particularly 347 H core का high grade और high powers grade और high temperature application. When you go in H, you have a high temperature application grade material, right? So when you have temperature 583, your temperature exposed, you have a bunch of okay. Now the final is stress corrosion training. Now this is a Hobson ball. Hobson ball, what it says, when you have a nickel, when you have percentage of nickel, your stress corrosion training subsequently drops. So that is why duplex stainless steel can, or otherwise nickel based materials there because of this curve, right? See the transparent stress corrosion training is well joined. How the stress corrosion training look like? They just look like a branch like that, just like branches, right? Just like an IT. पिछले कैसे होती है इसी टाइप का stress corrosion training. So what are the welding considerations? I have mentioned you for austenitic stainless steel. Interpass temperature and range is not required silver metal in this one. In duplex stainless steel, we have also discussed this one, duplex stainless steel. Now, PRE and impact since meeting extra sequence number for standard duplex stainless steel 2205. Sorry, 2205 is 35 to 36. 35 to 36. So, if you have more aggressive environment, we use a 2205 or 25. Or 2750 greater than 41. Okay. Roll of temperature we have discussed it. Go to the roll of temperature. Okay. Now this specification diagram. You will see this between 1000 degrees centigrade to 300 degrees Celsius. 1000 to 300. There is a combination of sigma, psi, carbide, alpha prime, so there is a because of the ferrite, isos of the ferrite, and the biggest issue with the duplex stainless steel. That's why PWST of the duplex stainless steel is recommended. Because PWST with 600 to 700 will destroy your weld drive. It will give a sigma and precipitation. And duplex stainless steel, you shouldn't use about 300. That is also true because you have immediate danger of alpha prime, right? So this are some important from this material safety dynamics. Now some critical guidelines I mentioned. To weld duplex stainless steel, you will need a boosted nickel consumable like regarding this shielding gas. Better you use 2% in nitrogen. This is combination either plus 2% in nitrogen. This is also a good welding guidelines in AWS journal, right? Technical guidelines for welding duplex stainless steel. Okay. Some pictures of duplex stainless steel units direct for grade 17. So for welding a duplex stainless steel, we use 2209 and consider nickel because nickel pushed up the phosphate.
right? We use the nitrogen as a sheeting gas, and the low impurities is like sealer maker. Yeah, That's okay. So, ferrous metal defects is very important. When you have a fast cooling, too high ferret, when you have a slow cooling, you have every possibility of active carbohydrates and some intermetallics. And it's the fate. So, you have to always, it's a matter of state. You have to, optimize your parameter. Up to a second, up and duplex textile, the current welding, so that you can get to 60% it's ferrite. And so, it's always a tricky job. You have to follow the practical welding guidelines for welding in duplex textile. Because there is always danger of hairstyles, precipitation of intermetallics, likewise, right? And then you destroy your material. इसलिए duplex textile branded proper follow the but internet में बहुत सारे literature available है. Internet का search करें international monument association IOM है उसका practical status guidelines है. We later electric कच्चा material दे literature है. And there are plenty of literatures available free. ठीक आप इसमें से आपका WBS बात करो WPCAM qualified करो तो there will be no issue. So things like US of China मैंने आपको expect किया था buffer गया था. This kind of take you deposit 304 SS directly without using buffer gaya. Your equal problem I people have filler maker equivalences 25 right you should work out your technical composition and you should see that you get the proper ferrite or not, which means whatever you do you should check that you get proper ferrite or not. You should be getting the proper ferrite 3 to 8 with any dissimilar or any more check. Right? So, regarding this ferrite also I've explained in this with this diagram. And welding concentration, particularly stainless steel. The last is the particularly stainless steel. Marxing is least weldable, difficult to weld. But what is more advisable that you just weld it. Just before partisan start temperature 250. Practically just you weld, then you maintain before 250, and after structure becomes obsolete, you just pull it. It means partisan welding is rather tricky. How you should first you should have maintain interface temperature again 450. You maintain that, then you allow to cool it. Once you have partisan, you taper it. You have tapered partisan, right? Because if you just weld without interface temperature, in this zone, partisan start, partisan finish, between below molded, you will have a cracking issues. Because partisan welding is not without risk. You have to, proper preheat, PWST, interface temperature control, everything you have to, all comes up करना पड़ता है. partisan textile, तो सिर्फ partisan side पर जाता है retailer. And partisan side सबसे highest phase है, बहुत little phase है. So that will that will not give you a safe weld metal composition. Right. Okay, so this time we say hybrid induced cracking. Hydrogen more somehow शेडिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ, अगर इलेक्ट्रोड जो है लो हाइड्रोजन प्रैक्टिस के हुआ, आप यूज करते हैं E07 H4, जैसे इसका H4 वाला नहीं हुआ, H8 वाला नहीं हुआ, otherwise if it's not properly electrode, that hydrogen get diffused into the weld metal and hydrogen that can get but yes, so these are some references. That's and I used to have welding knowledge dot computing. I invite questions from welding fraternity, cooperating. I just try to answer them with the best of my knowledge capacity, and
I know to interact with the very cooperative people always. And these are some of my particular works I have showed you, the case studies. They were not, sorry. Yeah. To that. What was it? It was I think it was. It is correct. It's very good. So you say, okay, I started getting my let's spare. Based on the something last time. If you have question display breaking models, this is the top. So if I support me by subscribing this blog, like I know to write, I will subscribe to very quick. If you have any question, we can have a question answer session offer. Questions, but you can write to me, but there is my cell number information, but cell number is in first side. You can WhatsApp me, like you can send my message, whatever you have. I love. Thank you. So, first things. First side, okay, not. You can have to. I think first side, I have. Yes, I know what's the contact even here. Then email ID also. And I feel this stuff to different stuff. So after a person will ISO 134 certification process. So we said we presenting into 5085. Railway industry. Some of you are working with railway in fabrication. Okay. So I am requested to complete it as a metric coordinator. So as a internal coordinator, as a 3834, I also contributed, this work. And apart from that, I am an academician. I am working in institute. Right? This is my talk. So before I end, I would like to, request Dr. Badeka sir, because actually not much time was available, and I think as I introduced him earlier, so Dr. Badeka sir has a he is representing a very renowned institute, and much of plenty of R&D work has been carried out. So, sir, what the next implement? You are the first probably pieces, just small, better. Actually, we have to do it. So, good evening, everyone. Thank you very much for this short opportunity. I mean, as you said rightly, I am from a university called Metallurgy University. And as far as this university is concerned, which was started in 2007, at that point of time, our present Prime Minister, he was the Chief Minister, and it was his vision to have a petroleum university. So it was started in 2007, and subsequently in the 2021, he suggested a date change. Instead of petroleum, replaced with energy. So it's from the day when university was working in a different domain of energy, renewable energy, and other conventional form. That's how the name changes occurred. Now it is started in the energy university. So coming back to the field, I have another 5 minutes probably. As far as welding is concerned, we always consider that welding is a metal joining process. But as far as the metal joining is one particular aspect, right? But we all know welding processes can be used for welding, surfacing, and hard piecing also. Welding processes also can be used for repairing materials also, right? So there are 3 different the functions that it has. You get to welding, that's a primary function. The secondary function which you do is welding, surfacing, and hard piecing. And the third function is that you do is repair and maintenance also. So whenever you have any welding system, you can do all 3 functions. Right? You look at, say, for gas metal welding system, you can do welding also. You can do welding, surfacing, hard piecing also. And you can do repair and maintenance also. So when we look at the welding, we should not just look at the welding from perspective that welding is just for metal joining. That is one. Another important aspect as far as the welding is concerned, the 4th important element, which is called additive manufacturing. Nowadays, researchers are talking about, or there are many welding-based additive manufacturing processes out there.
If you look at the exact definition of additive manufacturing, it's a joining of welding. Now you can compare, when you compare the welding technology and when you compare with additive manufacturing, you realize that there is a lot of similarity between these two. He explained you very nicely about making metallurgy, right? Or something which is about stainless steel, he explained you weldability. So when you print stainless steel, what the term is printability. Very easy right? So that is how we need to understand the integration between the welding processes and the additive manufacturing. Because additive manufacturing, you go layer by layer and you deposit the material, right? Then that's how we able to create a complex objects which are difficult to produce through a conventional manufacturing, right? So that's how both the fields are in. But as far as welding-based additive manufacturing is concerned, I'm sure most of you might be aware that there are gas metal arc welding, rest is arc welding. Majority of the arc welding processes, right, except for SMAW, all the welding processes can be used for additive manufacturing. Additive manufacturing means what? Layer by layer deposition. So that layer by layer deposition can be done in GMW source, GTAW source, plasma source, subatomic welding source, all kind of resource can be utilized. But the kind of the precision and the intricate shapes that you will get is different. But in laser conduit additive manufacturing processes, you will get high complex of. Now, before I mix some, I'd like to mention here that here, for understanding purpose, I brought few complex objects for understanding purpose. Now you see here, this is a laser conduit fusion. It's an additive manufacturing process through which you can manufacture such a complex object, which is very difficult to produce through a conventional. This is a 316 LOB, but you can see the complexity. See that it is like a high complex object wherein you have a you see the weight has gone down, surface area has increased, and the functional limit will go up, heat transfer rate will also go up. This is one. Similarly, you can see the other complex object, which you can see here, which is very difficult to manufacture with some conventional manufacturing. Say, for example, this is widely used in the refineries as a filter. Right? You see the complexity. This is 2.5, you can say. Right? So this is again with the additive manufacturing you can do. And few more objects are there. Say, for example, see the turbine kind of thing you can have. You can also have this type of, right? So these are the components like we can manufacture with the additive manufacturing. And since you spent a lot of time on welding, you can see here there is a welding process called friction welding. See, one side you have a stainless steel, another side you have a carbon steel. You join them, you see there is one has deformed more, another has deformed less. Right? Because both the material have a different property. Stainless steel has deformed less. Carbon steel has deformed more. Right? If you go carbon steel, you get uniformity. But here it is different. Similarly, there is a process called friction stir welding. Right? You can join dissimilar metals very easily with the processes. And to do that, you require this type of tool. You can see there is a tool. You can mount this type of tool on a vertical milling machine. It will be fabricated and then you will be able to weld. So there are many innovations and advances are there in welding. So what I wanted to tell you is that you don't look at the welding just from perspective of the welding process. With the help of welding process, you can do welding, you can do cladding, surfacing, hard facing also. You can do repair and maintenance also. And the fourth function is called additive manufacturing. And as I mentioned, the new field, which is called additive manufacturing. So there are many welding processes which has been used for additive manufacturing also. And in additive manufacturing itself, there are 7 different types of additive manufacturing process. Right? The component which you are observing, this is laser conduit fusion. So fine, at this, because I have limited time, so I just got for a few minutes only. But if you have any question, we have a dedicated welding research lab there. So you are all invited whenever you are coming to Gandhinagar, Ahmedabad. Please feel free to contact us. We'll show you the facilities, what we have there. And if you have any technical problem, research problem related to welding, please do share it with us. Thank you once again. I'm going to need to have research now. Check your get into what about the level and then thanks to
So we want to killing this and that's how. So that's right. Now, and Yeah. when I had said my son, he always feels tired after 50 minutes of study. He says, "He has like we can sure all of it also." Anybody who is a father or parent here, always face this. One day I had sent him to his teacher. He had taught 2 hours of physics and his daughter got 1.5 hours of chemistry. At 3 years, he comes back, wasn't refreshed. I said, I'm going to send you to that tomorrow again. Because if somebody is after 8 hours of teaching, if they look fresh, then it means the purpose is perfect. So I cannot see anybody sleeping here, they're all fresh. So I'm taking that analogy and I'm taking that cue. It has been a good session. But whatever the feedback is, please you can write it in the feedback form. And if you, particularly if there is any topic you want us to cover, then please let us know. We will be organizing more workshops, not just in GSSE, but otherwise also. Because morning till evening, what we are hearing is यहाँ प्रॉब्लम होता है, वहाँ प्रॉब्लम होता है, हमें सोल्यूशन नहीं पता है. तो बट हमें पता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे नहीं थे, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन दे सकता है वो हमें पता है. It's not always the material, it's not always the consumables, it's not always the process, but maybe a mix of all of this. So we will get the right experts. We will design more workshops which is industry relevant, which is for you, and which is demanded by you. So let us know all of that in the feedback form. And again, invite all of you to become part of KWSTP so that this Association of Welding, Skilling and Training Professionals truly live up to the name. Because एक चीज तो पता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, they all are passionate about welding. When the welding पे 3 घंटा, welding metallurgy पे 3 घंटा is, and I once had an online session with a very senior person from BHEL on electrodes, selection of consumables, and he said, I'm going to take it on electrodes. मुझे लगा electrodes is something even I find boring. 2 घंटा कैसे करेंगे? I told him, okay, 1 hour, maybe 1 hour, 1.5 hours. He said, yeah, don't worry. 6 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ ऑनलाइन, 10:30 मैं सबको रिक्वेस्ट किया, लेट अस स्टार्ट किया, वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट डे. There were close to 225 people online at that time. This is the power of how engaging a teacher can be, and that was for me to realize that even if there is a topic which is very boring otherwise, अगर सही ट्रेनर होता कि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. So we will continue to do that, and to make this association better, we request all of you please be a part of it, and let us meet tomorrow with another session where we are going to talk about codes and standards. We are going to basically once a quarter we go also standard में क्या चाहिए, all of that has to be, somebody has to talk on that as well, because ultimately it's a client's requirement. लेकिन आप लोग करोगे कैसे? For companies like JSL, you also need to educate your fabricator vendors. Like, it's like everybody feels scared about it. It's more like पुलिस घर पे आ गया, आप हमें क्या करें? So we are going to unravel all of that. We're getting another expert who is a very, very good knowledge expert, a subject expert on this. So we'll catch up with all of you. Certificate, अभी हम लोग सबको courier कर देंगे. You can give us your addresses so that certificates we can courier to you. It is available, but कुछ चीजें वहाँ पे हैं, somebody's signature and all of that has to be done. So we'll courier all of that back with you. Right? So we'll meet you tomorrow morning, I think. Thank you.